Good morning, my dear students. Today we are into our paper 3 of final advanced auditing and professional ethics. So this particular topic will be taken over by our faculty, CA Karuna Bansali and CA Rajiv Sachdevaji. But prior to that, we start the things. Our Honorable Central Council member, CA Durgesh Kabra, is there with us. He is the chairman of FRRB and he's the key person, and he is also into the quality audit control, also committee on audit, quality audit control, and he's the person who can really give you the nitty-gritties about the audit as to how to deal audit. And sir, the students are rather very scared of audit paper and they are not able to express themselves well. I think maybe they are not able to connect auditing with the practical training which they are doing, sir. So I really would request you to, sir, guide them as to how really they need to take this paper for their exams, because this is something which is a very core area of CA profession. So sir, over to you, sir, please. Thank you. Thank you, Vandana ji, the Director of Board of Studies Academics, Mr. Sachdeva and Karuna Bansali. It's indeed a pleasure to be part of the new initiative taken by Board of Studies. And I feel proud that I had also been associated with Board of Studies as Vice Chairman in 2019. And during that period, we have taken a lot of initiatives. And more particularly, we have converted everything into the ebook. The whole study materials of foundation, inter, final was converted into ebook. And beside that, what I feel is we started the voice also on the various ebooks which are there, which are the theoretical subject. And hopefully, as I requested Vandana ji, why not to add a voice button for the theory portion of the practical subject too. So hopefully she might have taken the that also forward, and probably all the students will get that benefit also. So wherever you go, wherever you are, you can listen instead of reading, and you can understand the subject in a much better way. It is rightly said that if you read, you understand less. If you listen, you understand more. And if you listen and visualize both, audio, video are both together, then it gives more perfection. So this is a series where you will be listening also, you will be viewing also, and you will be getting all the tips how you can clear your audit paper with good numbers in the exam. And let me tell you, my dear young friends, the audit is a subject for which the chartered accountants are not. We need to be perfect enough in the audit. And to be perfect enough in the audit, what I feel is you need to have the knowledge of all the standards on auditing, various practical guides issued by the implementation guides and guidance not issued with respect to the audit by the ICAI. Over and above, what is important is when you conduct the audit in the firm where you are working, you have to link yourself with all these standards and guidance note for the purpose of audit which you are taking, you are doing at the firms where you are working. I believe writing skill is most important. And when you have a perfect writing skill, you practice on writing, I think it will help you more. The auditing doesn't need, I believe, that you should write more, but you should write perfect. What is being asked, what should be the answer, that is more important. And being theory subject, if you feel that by filling the number of pages, you'll get more marks, I think that is a myth. That is not the right strategy. The BoS has also taken an initiative of putting a subject into the capsule form. And capsule is very, very important. It is being given in the Board of Studies newspaper for the students. So it is a student journal basically.
where you get these capsules for each subject, and the whole subject is available into the capsule, which makes you to understand the subject in a perfect way, memorize in a perfect way, so you can answer when you are writing your exam. The important thing which I feel is that you need to take seriously when you are conducting audit practically. What normally happens with all of us is that we don't take seriously the audit the way it should have been done. We just go into the office and do our tickings. At our time, it was ticking. Now it is online. But still, we verify in that particular fashion only. And it doesn't help. Let me tell you. You need to have proper planning for all this. Normally, questions will be on audit planning. Question will be on SQC. Questions will be on sampling. Questions will be on third-party confirmations. Questions will be ongoing concern. Questions will be on written representations. All these are there in the standards on auditing. But the important is whether you have practically done all these things. And if you have practically done all these things, you know what to write, how to write, and what is required to be mentioned and what is not required to be mentioned. So your practical experience will help you to write your exam in a much better way. But this is not our habit, where we are lacking. So we need to take our practical training seriously with respect to all the work which we are doing there, and combine all these standards on auditing when you are practicing it. Done your 3 years training, probably it will be 2 years training soon for all of you who will be the new students, will be registered under the new education system which is coming for the students of the ICAI. And I am sure, friends, today both the faculties which are very well-known faculties for the BOS, well-known I would say because they are working only for the institute. That is why we know them well. Probably they are not well-known to all of you. The reason being they are not the teacher. They take only the institute's classes, and they are looking after all the exam papers. They are looking after all the answers of the suggested, and they are one who makes the suggested answer. So it helps you to get a better tip from both of them, which will definitely help you all out that what to write, what not to write, and how to write. So I'm sure, friends, this today's session on the audit is going to be very fruitful to all of you, and you will get success in the audit subject. You will get the tips how to write much better. As far as I am concerned, I was having exemption in audit in inter also and final also. And this is all I am sharing is my personal experience. I did it very seriously, and I was more focused when I was doing so as internal audit. I need to understand through by walkthrough process that what are the various systems there in the organization. Unless and until you do not know the organization, its systems, what they are doing, how they are doing, what are their policies, what are the various SOPs, you will not be able to conduct the audit, whether it is production department, purchase department, sales department, and any other department, whatever you know, material department, whatever HR department, whatever department you name. Unless and until you do not do the walkthrough, you do not understand the subject, understand the SOP procedures over there, I don't think you will be able to do the audit in a proper way. And that is most important for all of us, my dear friend, to understand that and conduct our audit. And when you conduct our audit, you conduct the audit in that particular fashion. I'm sure, friends, no one can stop you to get exemption in your paper. That is my commitment to you. Please do it seriously.
I had, so I know this is my personal experience I'm sharing with all of you. With this, I thank you all for giving me a patient listening. I also thank Vandana ji for inviting me and guiding to the students to the extent I have the knowledge. But let me tell you, the audit is a serious subject, as is told by our President, sir. And I am sure that it is going to be practiced by the serious person, and you are the serious student. You are going to be the serious auditors in the country to be a partner in nation building, to be a complete business solution provider. With this, wish you all the great success in your career ahead, in your exam ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving all the sir important tips with all your experience. I think, sir, the way you have told them, I think audit is, they are going to take audit very seriously and will become serious auditors. And sir, I think, sir, students, the way you said, now they are segregating what they are reading with what they are practicing when they are going to for their articleship. So students, sir has advised you to take your practical training in a very serious manner. Don't disintegrate your studies with the practical training. He has advised you to know the SOP of the organization, because till the time you don't know the organization, you cannot prepare your audit plan, and then you cannot make your audit plan and then the audit program. So the tips which have been given by sir are very important. Don't take it that this is a dry subject. Sir has said it's for serious students, and if you are seriously looking into it, you are really going to be very successful. Sir, thanks a lot for all your tips and the advice you have given to the students. We hope that this is really going to make them understand the nitty-gritties of this subject in a in a much better way, sir. Thank you, sir. Thank you for, sir, sparing your time, sir. Thanks a lot. So students, after C. Durgesh Kabra ji has given his tips to you, now we'll move forward for this particular subject. Students, you must know that don't think that audit is a very dry subject. It is not. What is audit? You think that you put yourself, because you are the aspiring chartered accountants. Say after this attempt, or maybe say next year, by next year you will be chartered accountants. So once you are a chartered accountant and you are there in the examination hall, you are wanting to attempt the paper of auditing. How really you need to proceed with this particular paper? Because this is a paper where direct questions are not going to be asked, because you are in the final level. And since you have already done 2.5 years of your practical training, so the kind of questions, the scenarios which are drafted, which are going to test your knowledge as to what you have learned during your practical training. So don't segregate what you have studied with what you have done in your practical training. Correlate both of them. When the question is asked from you, put yourself into the position of an auditor, that you are the auditor of the company, right? And this situation is posed to you. So in that particular scenario, how you are going to deal with this particular scenario, the issues which are being posed to you through the case scenarios. So there is nothing different. Don't think that what you are learning, what you are auditing in your the practical training which you are getting, they are not different. And the questions are also drafted in such a way that what you have learned during your practical training, you are able to put yourself in that, and you can analyze, you can apply your mind in that direction, assess it, and give your solution, right? So very first thing I would like to tell you is, understand the subject well. Don't think it is difficult to score. Rather, I'm telling you, this is one paper. If you seriously take it, you can score
more than 60%, right? But students, the way we have been analyzing the results, which have been also taken up, this particular aspect was taken up on the 1st September 22 session also. Our Honorable Chairman and Vice Chairman had given you the way students have fared in this paper. What has really happened is, what has been assessed is that students are delinking themselves. They are not putting themselves into the position of an auditor. They are not applying their knowledge, what they have gained during practical training. So that is why you are not able to answer properly. What is really happening is, when you are reading the question, there are two parts to that question. In a hurry, you read only the first part, you attempt that first part only, and second part you ignore completely. And then you realize that you have not scored much marks. See, students, once you are not going to attempt both the parts, you are going to be marked for only one part only, right? So reading the question and understanding the question, those 15 minutes time, you need to use it properly. Our faculty, CA Karuna and CA Rajiv, they'll be taking you through to the details of this subject. They're going to make it very simple for you. And they're going to tell you that auditing is not something, and standards of auditing are no different than what you are doing in your practical training. It is something to guide. Why auditing is there? Why the standards of auditing are there? That there are certain standards as to how you need to do audit, as to how you need to plan your audit, then how you need to prepare your audit plan, and then start conducting the audit, right? So students, think that you are an auditor and apply your knowledge accordingly. So students, don't think standards of auditing are something very, very different. What are steps, like CA Durgesh Karwaji had also told you, what are the analytical procedures you are going to adopt when you assess the internal control of the organization? Whether third-party confirmations are available with you, whether you are having the maker-checker concept is present in that particular system. All these things are going to help you in planning the audit. So standards of auditing are telling you what all is present over there. And they're telling you the steps one by one as to how you need to proceed. So what you practically do is given in the form of standards. And once you are writing in the question paper, please understand that you have to understand the key words in a particular standard. Like, you need to be very thorough in what is due diligence, right? So due diligence is very important, right? If you are not applying due diligence, how you are able to do the audit in a very, very concrete manner, in a transparent manner, right? So due diligence is very important. What is due diligence? That you have adopted all the methods which you need to take care while doing your auditing. Fine. And then another term which is very important is professional skepticism. So these are the two key things, if you remember, for this auditing paper: professional skepticism and due diligence. These are two key areas. If you have it in mind, being an auditor of a company, as to what steps you need to involve, put yourself, what all you are collecting, what all audit evidence, what all internal control measures you have assessed, what all documentations you have compiled for doing your audit, you make a file of that. And this particular file is known as audit evidence file, right? So what all you are collecting, these audit evidence is going to help you in planning your audit. Once you plan, then you are tomorrow, when you are being asked as to how have you done this particular audit, these audit evidence is going to help you. It's going to tell you that this is what you had done. This was the due diligence which was carried out by you in this particular aspect. So students, you need to know all the steps, take them in a very, very practical manner, and you will be able to do this paper. I'm telling you, this is one paper which is the core area
of the profession. Auditing is related with accounting. So once you are doing auditing, you need to know whether a company has followed AS or Ind AS, whichever the case be. So you don't have to form the audit standard. You don't have to look into the Ind AS, but as an auditor, you have to see whether the company has followed AS or Ind AS, as the case may be. If they have not followed, you as an auditor, you have to report the same thing in your audit report. Fine. And you find that there are small errors are there. Errors to the tune of, say, if a company's balance sheet is of 100 crore, and if the materiality of the transactions which you are looking into, they are to the tune of 1,000, 10,000, you are not required to mention everything in your audit report. What you have to mention is keeping in mind the audit materiality concept. So what is materiality? Which is really going to make a difference in the financial statement of the company. So students, you have to be very thorough. You should know the concept of audit materiality. And after you follow the due diligence, students, what really happens is when you report all these your qualifications in the audit report, what type of qualification it should be, whether it should be simple qualification or it is a disclaimer, this is something you need to decide. Whether the books of accounts, whether the financial statements are made as per the books of account, whether any material statement has not been provided in the financial statement, whether there is a material misstatement which has been shown by the management in the financial statements. So you need to be very careful that all these things are covered in your audit report, right? Then you need to also know about the difference as to what are matters of emphasis, right? What is matter of emphasis? How they need to be reported, whether when they are being reported as matter of emphasis, you need to cover in your main audit report or not. So all these nitty-gritties, I am only briefing you about it. Both are faculty. They are the ones who will make your life very simple. I have given an overview. They will go into depth. And mind you, students, if you really keep into mind all these tips, success is for you. And we have given this nomenclature, BoS For Your Success. And BoS is at your doorsteps for telling you how to attempt yourself, how to plan yourself for these 2 months' time. This planning is going to help you in strategizing your time of 3 hours during exam. So students, our sessions for auditing for final will be on 2 days, today as well as on Monday. Attend these sessions, ask your friends and peers also to join and gain this benefit. And students, these sessions are going to continue till 26th of September, and from 27th September onwards, we are going to start with the mock test papers also. Right, students? So the mock test papers, attempt them. If any branch is near your place, you can go over there and attempt those questions. And then see the answers. These 2 mock test papers, if you do it of these 2 series, I'm telling you, nobody can stop you in passing in this exam. Because once you write, you check where you have gone wrong. I think getting in these mock test papers 20 marks out of 100 is not going to make a difference. This 20 will be multiplied by 3 if you have attempted both the papers. So attempt these papers, write the answers. You should know. I know you know what has to be written, but due to constraint of time, due to pressure at that time, you are not able to complete the answer. And you are not able to write the manner in which you are writing. You are expected to write. So once you have done this practice of writing, in exams, you will be able to plan out and you will be able to do very well. That is what something BoS is assuring you. If you attempt it in a proper way, you will be able to really
make a difference in this paper. And this paper is not going to be an inhibitory factor for you. It is going to be, it will open the doors for your success. Right, students? So before I give the mic to Karuna and Rajiv ji, I just apprise you about the section-wise weightage and the skill-wise weightage you need to keep into mind. Fine. So students, the standards, please understand. And the standards are something which you're already doing it in your practical training, right? Just understand the nitty-gritty of auditing standards, and it is having a weightage of 25% to 40%. So students, be very clear in your auditing standards. Make your notes. Rajiv ji will guide you as to how to pick up key points, key terms from each standards. And Karuna will also tell you as to how to deal with the question. So both of them are going to make your life very, very easy. Then we come to audit of limited companies. It is having a weightage of 15% to 20%. Then I come to the third section, which is special features of audits of banks, insurance, and non-banking financial companies. It is having a weightage of 15% to 30%. So students, during your audit, many of you would have done bank audits. Many of you would have done audit of insurance companies. You also would have done audit of NBFCs. So what you have learned over there, just correlate with what you are reading. That is really going to make your life very, very easy. Then I come to the section 4, that is audit of public sector undertakings. It is having a weightage of 10 to 20%. And then students come professional ethics, which is the backbone of our profession. So you need to be how ethically you are planning your studies, how ethically you're putting in your efforts, and how ethically when you become a chartered accountant, you do your audits. That is what is expected from a chartered accountant, because you are the one who is going to take the torch of this profession forward. So be ethical, understand the nitty-gritties of ethics, and I'm telling you, you will be able to score well and you'll be able to practice as a chartered accountant very well. And this particular section is having a weightage of 10% to 15%. And students, thus about the skill-wise weightage, knowledge and comprehension is to the range of 20% to 30%. Sorry, 20 to 35%. Application and analysis is having a range of 45% to 70%. And evaluation and synthesis is 10% to 20%. So students, I have given you broadly the tips and the manner in which you need to attempt this paper. And the detailed paper will be done by our faculty. So I'm handing over the mic to CA Karuna Bansali and CA Rajiv Sachdeva, and they are going to be there with you for today as well as on Monday. So all the best, work well, study well, and success is yours. Thank you, Karuna ji and Rajiv ji. Over to you. And students, before they start, there is going to be a short break for a minute, and where we are going to change the platform. So kindly bear with us, and the session will resume after 1 minute. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am.
Good morning, students. Before starting, first of all, I would like to thank our Central Council member, C.A. Durgesh Kabra ji, and our Director Board of Studies, C.A. Vandana Nagpal madam, who gave us opportunity to interact with you all in BOS For Your Success subject-specific session for CA Final Paper 3, Advanced Auditing and Professional Ethics subject. For this session, I, along with C. Rajiv Sachdevaji, will be taking you through the session and we will be guiding you how to we can score very good marks because your object is also same and our object is also your success. So for both objects are same. So we will be taking it through. So students, hope you are doing well and your preparation is also going smoothly. Many times we got chance to interact with students. Some of the students, they got exemption in other subject and they are struggling with auditing subject. Some of the students, they are just failing just because of auditing subject. So when they come and interact with us, in fact, in webinar, on 1st September, where our Central Council member, BOS Chairman C.A. Dayanivas Sharma ji and Vice Chairman C.A. Vishal Doshi ji told you that in auditing, not only at intermediate level, but also at CA final level, the result is lowest. So auditing is core and heart of our profession. It's very important subject. So you need to understand that we cannot ignore this subject. Don't think, as madam told you, that this subject is not right subject. Think, imagine that yes, we are chartered accountant and we have to go for audit. So how we will pursue? Okay. So at final level result was approx 15 to 17% and at intermediate level it was 11 to 13%. So we need your help and support as we are guiding you and taking you through the session that where you are doing some mistakes which you will not be repeating and you will be getting good marks as I told you because both the objects, our object and your object is same that you got success and very good marks in auditing subject. Students, if a doctor who has not done his course seriously, who is not aware about composition of medicines, who has not gone through surgery procedure, will you be going to them for your treatment? No. In auditing, after becoming chartered accountant, this is very, very important subject. So try to understand that we will not ignore auditing subject. Just like FR, taxation and other subject, you can get very, very good marks in auditing subject. How you will be getting? We will be telling you the paper pattern, what kind of questions are being posed in examination, what kind of mistakes you are doing and how to improve, how to read the question, how to understand, how to answer that question, that all the aspects we'll try to cover in our session. Not only with the help of previous question papers, we will also try to help you with some other questions and with drafting of opinion, how to draft the opinion. So one thing I want to tell you, as madam told you, a director board of studies, that what is our section wise and skill wise weightage. Students, she told you 25 to 40% is our section 1 covering. What is in section 1? You are aware all the auditing standards related in chapter 1 all auditing standard is there. In chapter 2 audit planning, third chapter risk assessment, all are related to engagement and quality control standards. Audit report is also part of section 1. For this we have prescribed weightage 25% to 40, means 30 marks minimum and 48 marks maximum. Think, when section 1 can give you 48 marks or minimum 30 marks weightage, means 40%, and what we need for getting through, what we need for passing the auditing subject, 40 marks only na, but we will target for 70 or 80 so that we can get at least 60 marks. So think,
What is section 1? It's all about engagement and quality control standard. So engagement and quality control standards are very, very important. How to study, don't ignore it. Even when you are preparing for nursery class, first class, second class, third class, or so on. Are you studying only for 2 months or 3 months? No. We give complete 1 year for the preparation to try to understand. For auditing, if you are allocating only 2 months or 3 months, or if you are going only for shortcuts, then it's very difficult to get good marks. You have to justify with this subject because it is getting lowest marks and you all have to study. You need to understand how engagement and quality control standards are very, very important, not only ethically, but also it is statutory requirement. And just like I gave you example of medical profession, if we ignore engagement and quality control standards which are guiding us how to go ahead, how to conduct our audit, what are the procedures to be followed, because whenever you will be answering descriptive question or MCQ based question, you will be getting what is the role of auditor, how auditor will report, how auditor will deal, and all the answers are given in your engagement and quality control standards. So please make a note that you will not ignore our standards on auditing because these are very, very important. Its weightage is minimum 30 to 48 marks. So we have to study carefully. In addition to that, we have another 4 sections about which ma'am told you, and we will be covering all the sections. We will be telling you how to go about it. And prior to that, sir, would you like to guide students? Why not? Why not? Why not? Yes, students, about Karuna madam was talking of standards on auditing carrying 25 to 40% weightage, and absolute, if I am talking of absolute number, it appears in the examination around 25 to 35 marks. And essays are, students come to us that they say that essays are, sir, we are unable to do, how to start essays, how do we do essays, we are unable to write in the examination and so on. So we say कि आप essays को अच्छी तरह से कर लो. Yes. लेकिन करो कैसे? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है. Everybody saying that do essays properly, it will appear in the, it will have due weightage of 25% to 40%, do it seriously, do it. But how to do it, this is very important. Now I will tell you how to build up basics first. Do not do questions of the essays. This is my advice to you. Do not do directly questions of, direct up question attempt karne matlab jo, even if you are at CA final level. Still I am advising you, do not do directly, do not try to do the questions directly. What you need to do, first you build up basics of essays. Basics of essays means ABC of essays. Unless and until you do build up basics of essays, you will not be able to attempt questions which appear in the examination, because you do not know which question will appear in the examination, because new questions are asked in the examination. So if you are aware with the basics, I give you one example. If you are aware of the ABC in English, then you are able to form words and sentences. It will not be deep. But without understanding ABC, will I be able to form words and sentences? Answer is no. In similar fashion, if I am working on the ABC of the essays, अब ABC क्वेश्चन arises कि how to do ABC, अब ABC build-up भी कैसे करूं मैं? So I will give you two-step strategy. How will you build up basics ABC of essays? Number 1, you just have backup of at least 50 definitions, 50 plus definitions. Although these definitions will not appear in the exam, but I will tell you that these exam definition part will help you to attempt the question which will be asked in the examination. Now, definition, at least 50 definition. You practice one definition
for at least just read the definition. How to practice then? How to build the basic? How to build the backup of these definition? कैसे definition मैं अपने mind में establish करूं? ये भी एक बहुत बड़ा question है. अब students, 5 times reading is the best part. आप किसी भी definition को कम से कम, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ के आपने छोड़ दिया, ऐसा मत करना. 5 times to 10 times I should say. आपके माइंड में डेफिनेशन एस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएगी, पक्की नहीं होगी पूरी, लेकिन होनी शुरू हो जाएगी. और उसे कम से कम आप, अभी एग्जाम में टाइम थोड़ा बचा हुआ है, ये मैं मान रहा हूं, तो आप उसको कम से कम 3 days तक कैरी फॉरवर्ड करिए. एटलीस्ट 3 days 5 times रीडिंग करिए, आपके माइंड में डेफिनेशन एस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएगी. जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कि कौन कौन सी डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल है. आप 50+ डेफिनेशन का बैकअप रखो. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, right? And then audit risk, misstatement, risk of material misstatement. Ma'am was talking of, Vanna madam was talking of professional skepticism, due diligence. So likewise, inherent risk, control risk, audit risk, detection risk, 50+ definitions. आप एटलीस्ट बैकअप अपना बनाइए. जो ही आपके माइंड में बैकअप बनना शुरू हो जाएगा, एसेज आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, एसेज आप एंजॉय करना शुरू हो जाओगे. अभी मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखूंगा. बिल्कुल अभी बिल्कुल करुणा, आई एंडोर्स टू करुणा कि वो आपको अभी कुछ बताएंगे, उसके बाद आई विल कंटिन्यू कि हाउ टू बिल्ड द बेसिक्स ऑफ एक्सेस. बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे आपको बताया है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हम उनके कई क्वेश्चंस भी कवर करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर जनरली डूइंग, हाउ टू improve that, and with the help of paper we'll be telling you. So students, you are aware that our paper is divided into two parts. One is objective, that is part A, and division B is based on descriptive part. So for MCQ based we have 30 marks. One second. 30 marks paper is MCQ based. Okay. So 30 marks paper is basically MCQ based paper, and 70 marks is descriptive. Okay, and for 30 marks again we have two integrated case scenario, maybe 3 questions or 5 integrated case scenario based question, and we have independent multiple choice questions also. Now try to understand कि at CA final level questions are not knowledge based, they are generally application and analysis based or evaluation and synthesis based. Now what is application and analysis and evaluation and synthesis means? You have to apply the provisions which you have understood, which you have learned. You need to apply that provision and then accordingly you need to answer. And for evaluation and synthesis, generally it is an integrated case scenario based question. You need to read the case scenario carefully, wherein more than one provision is being asked in the question. You need to apply both the provision, interrelate it, interlink it, and then accordingly you need to answer. For independent MCQ also, few questions are knowledge based and remaining are application and analysis based. For application and analysis or knowledge based MCQs, you can use elimination method or best and correct answer. So first you need to understand that what are the instructions given to you in your question paper. Your question paper is comprising of two parts, that is part 1 and 2. Part 1 is MCQ, that is for 30 marks. Part 2 is for descriptive question, that is 70 marks. Here in this descriptive questions, you are having 1 compulsory questions, and out of 5 you have to attend 4 questions. So it means you have to answer 5 questions, right? Wherein this section wise and skill wise weightage is being applied. Okay. For part 2, you have to mark the answer in OMR sheet. Okay. And for part 2, you have to write the answer in your answer sheet. So before going to that,
we'll be telling you some we'll be sharing some important information, and then we'll be going question by question. We'll be analyzing the question, how to answer it, what kind of mistake is being conducted, and how to improve it. Okay. So first you note that this BOS for your success subject specific section is plan, prepare and perform. So when you are doing your planning, you need to consider all the resources which are available for you, right? So what are the resources available? That is our October 2021 edition study material, MCQ and case scenario booklet, January 22 edition, revisionary test paper November 22, a mock test paper, suggested answers, and of course live coaching classes wherein assignments, notes and MCQs practice are being given. Now I want to tell you that study material, whatever is given in study material and whatever is applicable, like cutoff date for your November 22 examination is 30th April 2022. So the amendments which took place, which are not covered in study material, are given in your RTP academic update part. It's also given in amendment part on BOS knowledge portal. So for RTP, you have two parts. One is our amendment part, that is academic update part, and second is where you can practice the questions. Mock test paper are generally conducted in two series. Series 1 will be starting just after completion of these classes, means by 27th of September, and suggested answers are nothing else. It's our PYQs, means previous question papers, of which answers are also being incorporated in the same. Now where you can refer all those, you need to go to BOS knowledge portal, means you need to go to ici.org, where you can go to student section. On BOS knowledge portal you will get all the resources. You are also advised to download BOS mobile app, because on BOS mobile app you will be getting all the resources, all the study material, amendments, our capsule, our RTP, academic updates, amendments, and if there is any corrigendum, that is also being available on BOS mobile app. And all these classes are also recorded, lectures are also given on BOS mobile app. So a student can refer BOS mobile app for that. Definitely. Yes. So in addition to that, we are having our this live coaching classes, where all the recorded classes are there. When you are revising, if you find any difficulty in any of the topic, you can refer those live coaching classes. Revisionary notes and assignments are also being given on the BOS mobile app. Our RTP you can use for revision. Suggested answer, you can sit in examination condition, you can solve more or more PYQs, so you can get the idea of what kind of question paper generally comes in exam and how to answer those questions. And with the help of suggested answer, you can analyze your condition, situation, and you can work in that direction. We are also conducting two series of mock test paper. In examination condition, you can sit and you can solve that mock test paper, and you can identify where you are weak and where you need some improvement. In case if you need any help from our side, you can also contact to us. So, sir, what kind of language they should use? Yes, I was telling you how to build up backup of essays. I was telling you that you should as a first step, you should create a backup of at least 50 plus definitions. This is minimum. This is not so that you do 50 definitions in a single day. No. This is not done. You have to do 5 definitions in one day. And in 10 days, you will be able to build up backup of 50 definitions. So this is how you will be able to build backup of the definition. Not definition, for example, up now you will say how to do the definition. Definition आप linkage बना के कीजिए. Linkage is very important. For example, I give you simple example. One example only. Audit documentation. For example, audit documentation.
audit documentation refers to, audit documentation means, audit documentation may be defined as, आप इनमें से 3 मैंने आपको बताए हैं अल्टरनेटिव, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. हमेशा जब भी आप डिफाइन करेंगे एग्जाम में, अगर वो डिफाइन करना भी पड़ जाए आपको, तो आप ये तीनों में से कोई एक यूज करना स्ट्रेटजी. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू, अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो रिकॉर्ड ऑफ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ, 3 चीजों का रिकॉर्ड है ये. रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड. अब मैंने तो आज दिन तक इतना ही समझा है, उसके बाद 2 चीजें इससे लिंक्ड है, हमेशा लिंकेज बना के कीजिए. फॉर एग्जांपल, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिलेगा मुझे? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे एविडेंस मिल जाएगा. दूसरी बात यह है, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर स्टूडेंट्स परफॉर्म करूंगा तो मुझे एविडेंस मिल जाएगा, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. और अगर मुझे रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया तो क्या होगा? मैं अपने कंक्लूजन्स बना लूंगा. और थर्ड इसमें यही बात है कि कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स refers to record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and the conclusions the auditor reached. मैंने एक लाइन याद करके मैंने 3 सेंटेंसेस का बेनिफिट ले लिया और मेरे माइंड में सेटल भी हो गई डेफिनेशन. 5 टाइम्स आप इसको रीडिंग करो, 3 दिन तक आपको रीडिंग, 3 दिन कॉन्टिन्यूस करो, आपके माइंड में सीमेंटेड हो जाएगी डेफिनेशन, एस्टेब्लिश हो जाएगी. इस तरह करके जो मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई है, लिंकेज बना के हमेशा पढ़ो. आप कम रीडिंग के अंदर आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो. दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अप बैकअप ऑफ 50 डेफिनेशन, 50 प्लस डेफिनेशन. इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है, करके बता दिया. ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूं कि आप इन डेफिनेशन का बैकअप बना लो. नो, मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है, वो भी बता दिया. एग्जांपल लेके मैंने कि ऑडिट डेफिनेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आई अगेन एक्सप्लेन, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म. मैंने तो आज दिन तक इतना समझा है. उसके बाद 2 बातें अपने पास से जोड़ लो, लिंकेज है, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड. यस करूंगा. So sir very nicely explained and told you that for engagement and quality control standard, if you want to write best answer, then certain definition you need to understand, you need to learn. It's not कि you have to write same language. You can write in your own words, you can write in your own language. आप बस इतना है कि कुछ important टेक्निकल टर्म्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है. तो अब हम हमारे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जहां हम आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि वेयर वी आर लैकिंग. और जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक वी जनरली Arya, nuclear is not applicable. Students, list of applicability is uploaded on website. If you refer BoS knowledge portal, in fact in announcement part also it is given what is applicable and what is not applicable for November 22 examination. So Miss Arya, you need to refer that list of applicability list wherein it is specifically mentioned that nuclear provision is not applicable for your November 22 examination. In fact, not only nuclear but also GST audit is also not applicable for November 22 examination. In addition to that, you must be aware that SA 800 series, SAE, SRE and SRS, those 10 standards are also not applicable for your November 22 examination. So you, for this list of applicability, you can refer BoS knowledge portal as well as you can refer BoS mobile app. And one more thing, for guidance note and other publication also, it is clearly mentioned that code of ethics, guidance note on independence of auditor, guidance note on audit of inventory, guidance note on audit of debtors, loans and advances, guidance note on audit of investment,
guidance note on audit of cash and bank balance, guidance note on audit of liabilities, guidance note on audit of revenue, guidance note on audit of expenses, guidance note on CAT, guidance note on audit of payment of dividend, guidance note on audit of capital and reserve, and guidance note on reporting under section 143 F and H of the Companies Act, and guidance note on reporting of fraud under Companies Act. These are the guidance notes are not at all applicable. So please note down, list of topic wise exclusion from the syllabus is uploaded on ICI website, as well as it's given on BoS Knowledge Portal on BoS mobile app. What is applicable, what is not applicable. Now, what is applicable? All the engagement and quality control standards other than SA 800 series, SAE, SRE and SRS are applicable. CARO 2020 is applicable. All legislative amendments which took place, cutoff date is 30th April 22, are applicable. Our revised statement on peer review, which is given in our study material October 21 edition, is also applicable. Code of Ethics 2020 is applicable. Of course, NOCLER is excluded this time. Applicability of amendment to Schedule 3 to the Companies Act 2013 is also applicable for your examination. So, 3 guidance notes are applicable. One is guidance note on audit of bank, guidance note on audit under section 44 AB of the Income Tax Act, and guidance note on audit of IFC, internal financial control over financial reporting, on which one question was also being asked in May 22 examination. Question number, I guess, 2A. It's based on ICFR. So, moving towards our May 22 examination question paper. One more query was there. No? Yeah. Mr. Sumit is asking, I am writing exam in Hindi. How should I write answer? Sumit, आंसर का जो पैटर्न है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सेम रहेगा. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो कुछ वर्ड्स है, जो टेक्निकल टर्म्स है, वो आपको हिंदी में भी पता होंगे. आपको वो लिखना है. पैटर्न सेम रहेगा. जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन किस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है. उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है हमें उसको देना है. आज और मंडे को जो हम ये सेशन में आपकी यही हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, उसमें क्या एस्पेक्ट आप मिस कर रहे हो. जो हमें एग्जामिनर से कमेंट मिलते हैं कि बच्चों ने ये मिस्टेक की है, उसको एनालाइज करके हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे एनालाइज करना है, और क्या आपके आंसर के पार्ट होने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में. लैंग्वेज इज नॉट बैरियर. You have to write in the same manner. You need to read the question carefully, whether it is in English medium or it is for Hindi medium. You need to understand what is the requirement of the question, identify those requirements, and then accordingly you need to answer. We'll be helping you in assessing what are the mistakes being committed by the students while attending the question in examination. So moving towards our first question, which is of May 22 examination, wherein PQR and Associate Chartered Accountant is a partnership firm having 3 partners, CA, P, Q and R. So in this situation, we are talking about a chartered accountant firm where 3 partners are there, P, Q and R. PQR are appointed and associates are appointed as statutory auditor of ABC Limited, a listed entity. Now here you need to note down specifically that ABC Limited is a listed entity. Okay. For the financial year 21-22. CAP is engagement partner. You are aware where engagement partner is being discussed, SQC1 SA 220 and in definition part. Okay. So CAP is engagement partner who is doing the audit for ABC Limited, listed entity. And now the situation arises where before issuing the audit report of ABC Limited, CAP asks to CAR. These 3 partners are there, CAP, Q and R. CAP is engagement partner. He is asking CAR to perform engagement quality control review. Okay.
So CAP asked CAR, please review it. And what did he think? He think that his responsibility will be reduced after reviewed by CAR. Whether it is possible? So our question is, one question is, if CAP is asking CAR to review whether responsibility of CAP will be reduced. So first question is whether the contention of CAP is correct. So you need to answer this part. Then our second question is, what are the aspects that needs to be considered by CAR while performing engagement quality control review for audit of financial statements of ABC Limited? Now students, first of all, you have gone through the situation. It's practical based situation where three partners are in a firm and engagement partner is conducting audit and he asked some other partner, that is CAR, to please review it with the intention that if CAR will review, his responsibility will be reduced. That is not at all possible. But where it is mentioned? So what is the source that authenticate ki yes, the responsibility will not be reduced? It's given in SQC1. It's given in SQC1. You need to give reference of SQC1. Yes, SQC1 is parent of all the standards where all the important aspects which are discussed in other standards are covered in SQC1. So SQC1 is telling that whether it is being reviewed by R or not, responsibility of P will not be reduced. So contention of CAP is not correct. What are the aspects that need to be considered by CAR while performing engagement quality control review for audit of financial statements of ABC Limited? Sometimes it happens with you also. Somebody tells you that you review it. Now what is your responsibility? How you will review it? What are the aspects you will take care while reviewing? So what you will be taking care? So for that also, in case of listed entity, SQC1 is specifically guiding you what are the aspects you need to consider. When you are going for review, definitely you will see that our engagement team is independent or not. So you have to evaluate the firm's independence. Then only you can rely on the procedures. Then second part is, what are the significant risks identified during the engagement and what are the response? So when somebody told me to review certain things, what will be my first step? I will see whether my engagement team is independent or not. What are the risks which are identified and how we have responded as per SA 315 and 330? What are the judgment made particularly relating to materiality and significant risk? Then if there is some controversial issue, if there is some difference of opinion, then how it is being dealt with, whether we have taken any appropriate consultation for that, the significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement, when the matter to be communicated to management or those charged with governance. So we need to specifically take care that how we will be dealing with the. So for this question, we got observation that for this SQC1, the performance was below average. It's poor performance because candidates first concluded the answer without giving reference. Students, you need to see when in court also, if you go and you talk generally, judge will not listen to you. You have to give reference of legal provisions or specific act, okay, or decided case laws. So at final level also, working knowledge is not required. You need to identify what is being asked in the question and how we can answer, what is the basis of that answer. So SQC1 is guiding factor for this situation. So we need to give the reference from where we got this answer ki yes, contention of P is incorrect. The guiding factor is our SQC1. So we need to give reference of SQC1, and then as I told you, many aspects like for controversial issues, for materiality aspects, for independence, these are the aspects which are discussed in SQC1. Now what students are doing, they are giving only one aspect,
that is independence of engagement team. Only one aspect, and they are not referring other aspect. For 5 marks question, you are expected to write the reference of relevant standard. You are right to conclude if the question is divided into 2 parts. One is whether the contention is correct or not, and second is what are the aspects, not aspect. What are the aspects that need to be considered? R is going for review. What are the things which he will be taking care? What are the procedure he will be following? It's the question is about that, and this fact is discussed in SQC1 regarding listed entity. So you have to read the same question carefully and try to understand what is being asked, and of course you have to give source of that so that weightage of the answer will be increased, because if we talk generally its impact will be very less. So it's better try to develop habit to give the reference of relevant standard, whatever is guiding you, telling you that, and for that you need to read the standard carefully. Don't think that auditing pronouncement book is so bulky, it's so big. If you will be studying only with the flow charts, if you will study only with the help of shortcut notes, will you be able to write detailed answer? Will you be able to understand what is the requirement of the question? Because you have not gone through the question, you have not gone through the standards, you have just referred flowcharts. Of course, we have also given flowchart in the form of capsule for all the standards, but you can use that for revision purpose. But at least at final level, where weightage is of 30 to 48 marks, you read bare standard. And if you read bare standard each day, one standard, only 35-36 standards are there, you can prepare for the same in 1 month's time very well, and you can revise also. You are the only one who can make your study very easy, your revision strategy. You can revise in very short duration of time. In fact, while referring this SQC1 question, one more question was being asked. Should I say something? Yeah, sure sir, sure. ये स्टूडेंट्स मैडम ने अभी आपको बहुत अच्छा समझाया कि आप रेफरेंस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि मैडम वाज सेइंग कि आप रेफरेंस जरूर दो, कौन सा एस्से उसमें इन्वॉल्व है, SQC1 जैसे मैडम वाज टॉकिंग ऑफ. अब स्टूडेंट्स कम टू अस एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये करें कैसे, मैं इसका रेफरेंस माइंड में फिट कैसे करूं. मेरे को तो रेफरेंस नंबर ही याद नहीं होते. स्टूडेंट्स कम टू अस, सर ऐसे के नंबर तो हमें याद नहीं होते और हम पेपर में लिख नहीं पाते थे. तो आई विल टेल यू, आई आस्क्ड यू जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन. मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सिंपल क्वेश्चन एक पूछता हूं कि मुझे ये बता दो आपके घर का नंबर क्या है, द हाउस इन विच यू आर लिविंग, आपके घर का नंबर क्या है. स्टूडेंट से यस सर मेरे घर का नंबर तो 50. नो प्रेशर, 53B दिस पूरा एक्सप्लेन कर. अब 53B आपको एकदम आपके माइंड में से कैसे निकल रहा है, बिकॉज आप उसमें रह रहे हो थोड़ी देर. आप और आपने कल परसों लर्न नहीं करके आए थे मेरे पास अपने हाउस का नंबर. आप जब से उसमें रह रहे हो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट है. तो नंबर्स हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फिट होते हैं जब उसमें हम रहते हैं. तो मकान में हम अपने हाउस में रहते हैं, नंबर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होता है. तो वेन एवर यू आर डूइंग एनी एसे, आप SQC1 में कर रहा हूं तो SQC1 के अंदर मैं अगर थोड़ी देर रह गया, हरी में नहीं करना इसको कभी भी, उसको आराम से करना है. जब आप उसमें आराम से करोगे इट मींस यू आर लिविंग इन दैट, उसमें रह जाओ थोड़ी देर, से हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी टाइम आपको लगता है, 2 घंटे आप SQC1 कर रहे हो, रिलीजियसली करो. नंबर ऑटोमेटिकली आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको फ्री मिलेगा. नंबर ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा. मैम ने अभी बोला, जैसे करुणा मैडम ने बोला कि नंबर आप जरूर वहां पे लिखो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर उसमें रह जाओगे थोड़ी देर तो नंबर आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली फिट होगा. लर्न स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. यस, यू कैन कैरी फॉरवर्ड. Yes sir, thank you sir. And so sir told you about the strategy. Yes, you know your mobile number, you know your गाड़ी number, you know your address. मैडम ने उसको और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, कि आपको अपना व्हीकल नंबर, आपसे आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड से आ रहा है. आपको मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल का नंबर, कार नंबर फटा, कोई हमें कभी लर्न नहीं करते इसको बैठ के.
इसलिए आपने कभी स्पेसिफिकली बैठ के नंबर को लर्न नहीं करना कि SA1 SA200 ऐसे, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो उनको नंबर वाकई में लर्न नहीं होते, मैं देखता हूँ, तो मैं उनको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप अगर आपको अपने मकान, या हाँ अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे कि मुझे तो अपने मकान का नंबर भी याद नहीं है, तो फिर आप बेशक नंबर को छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे आज दिन तक नहीं मिला जिसको अपने मकान का नंबर भी याद नहीं था। So it reflects ना कि what is important for Yes, them. So if yes. we develop this habit, अगर हमने याद रखने की आदत डाल दी, तो of course बहुत रहने की आदत डालनी है। बिल्कुल आदत याद तो डाल करने के दी लिए लर्न तो मैं कभी करवाता ही नहीं। हाँ, आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So when coming back to this question part, May 22 examination का question 1A we have discussed. It was for 5 marks और उस पे जो HE का observation था कि बच्चों ने reference नहीं दिया था, तो हमें इस बार जब November 22 का examination देना है तो याद रख के reference देना है और उसके बाद समझने की जरूरत है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, कंटेंशन पूछा है और एस्पेक्ट्स पूछे हैं, एक एस्पेक्ट नहीं। अगर आप भी रिव्यू करने जाओगे तो क्या सिर्फ एक चीज देख के आप ओके कर दोगे? नहीं, तो वो एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं। SQC1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अगर आपको और डिटेल में आपको समझना है, यू कैन रेफर आवर लाइव कोचिंग क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर। इनफैक्ट फॉर स्टैंडर्ड्स पार्ट यू कैन ऑल्सो सी आवर intermediate session which will be on 19th and 20th, wherein we'll be discussing in detail only engagement and quality control standard. Because we have paucity of time, so today not only this standard part, we will also be discussing professional ethics, peer review, quality rule. In fact, we'll try to discuss all the sections where what kind of mistakes are being occurred, and that we will not repeat, because हमें आपसे और आपको हमसे एक प्रॉमिस करना है कि हम सिंसियरली सीरियसली करेंगे और BoS फॉर योर सक्सेस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशन है उसको उसका बेस्ट यूटिलाइज करके हम पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, राइट? सो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन 1A ऑफ जनवरी 2021 एग्जामिनेशन। सी, our question 1 is generally, compulsory question is generally based on engagement and quality control standards only. क्वेश्चन नंबर जो 1 है हर एग्जाम में जनरली उसमें आपको एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, या तो उसमें आपको एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड होंगे या इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस बेस्ड होंगे, ठीक है? अब जो जनवरी 21 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, Messrs. NK and Company Chartered Accountants were appointed as statutory auditor of Fresh Juice Limited for the financial year 1920. यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो गई है। प्रीवियस ईयर्स ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय Messrs. LP and Associate. Last year audit was conducted by some other firm, that was LP and Associate. After the audit was completed and report submitted, it was found that closing balance of last financial year, that is 2018-19. Now where, because we are referring that 2021 examination question paper, we have not changed any year for your reference. So we are talking about financial year 2019 and 2020, and where we are talking about previous year where audit was conducted by Messrs. LP and Associate, means some other firm, in 2018 and 19. Okay, so were incorrectly brought forward. Now what is happening? Previous year's audit closing balance was incorrectly brought forward. Okay, it was found that the NK and Company did not apply the audit procedure to ensure the correct opening balance have been brought forward to the current period. Now if we refer this situation, what will come to our mind? What we will refer? What will be in our answer? We will refer essay 500 series. 510. Okay. essay Sorry, 510. 510. Yes. So we will be using essay 510. Okay. But now read the question. Accordingly, a complaint was filed against NK and Company. What is being done? Complaint was filed. अगर आपने कोई भी गलती की है, कुछ भी गलत हुआ है, तो आपके अगेंस्ट में क्या हो गई है? कंप्लेन फाइल हो गई है। और ये कंप्लेन के लिए जो प्रोसीजर है वो कहाँ दिया हुआ है?
ठीक है. You are required to inform that what policies are required to be implemented by NK and company for dealing with such complaints and allegation as required by SQC. Now it's specifically given that the answer should be based on SQC. Okay, here it is specifically mentioned. And now what student have done mistake? They have given answer on the basis of SA 510. So please try to understand. क्वेश्चन आपसे जो बात कर रहा है, ऊपर आपको एक सिचुएशन बता रहा है कि ऐसी ऐसी एक गलती हो गई है, एक ऑडिटर ने इनकरेक्ट बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस को इनकरेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है, ऐसी एक मिस्टेक हुई है, आपने उसको बिना आगे एनालाइज किया ऐसे 5-10 डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, राइट? जबकि आपको क्या करना था, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि कंप्लेन फाइल हुई है एनके एंड कंपनी, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग बैलेंसेस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड किए हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेन हुई है उससे कैसे डील करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसी है, एनके एंड कंपनी को क्या पॉलिसी एडॉप्ट करनी है फॉर डीलिंग विद सच कंप्लेन्स एंड एलिगेशन. तो उसके लिए हमें भी एसक्यूसी 1 गाइड करता है. अब बच्चों ने क्या किया इसमें, आप देखिए ऑब्जर्वेशन जो हमें मिला है, बच्चे क्या कर रहे हैं, एसक्यूसी 1 की जगह एसए 510 कर रहे हैं, जो कि एसए 510 इज रॉन्ग, बिग रॉन्ग. यू नीड टू डिस्कस द पॉलिसीज विच आर रिक्वायर्ड to be implemented for dealing with such complaints and allegation as per SQC1. Yes. So you need to give your answer only on the basis of SQC1. See, what is the examiner's comment? What are the observation we got on your performance? That candidates did not understand the requirement of the question. Where we are lacking? See, we are not able to understand. The question is talking about policies. What are the policies to be adopted by NK and company? Because उनसे जो गलती हुई है उस केस पे अगर उनको कोई कंप्लेन या एलिगेशन अगर आती है तो उसके लिए उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी का जो रिक्वायरमेंट है वो एसक्यूसी 1 डील करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था. ओनली few कैंडिडेट्स रेफर्ड एसक्यूसी 1, but they also did not explain the requirement. So see, SQC1 is very important. Try to understand what is being asked in the question. That is why we have taken many more questions. We have also interlinked it with observations. What are the examiner's comments? What are the observation on the performance of the students? What kind of mistakes you are being committed by you, and that mistake we will not repeat. Still we are having time, we can study well. Don't go for shortcut, because again I am telling you, if you'll be going for shortcut, you will not be able to understand the question, you will not be able to give the required answer in the examination, and then again the problem will be, मैम नंबर नहीं आते, इतना अच्छा पेपर हुआ था, सब लिखा था, नंबर नहीं आते, क्योंकि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हमें लिखना है और क्या प्रोसीजर्स है. जैसे अभी पॉलिसी के बारे में अगर बात करें, एसक्यूसी 1 जो है वो आपको हर फॉर्म को एक पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो डिजाइन करना चाहिए, ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके. किस चीज के लिए, कि अगर कोई कंप्लेन या एलिगेशन अगर आई है, अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने में अगर आप फेल हो गए हो, या आपकी क्वालिटी कंट्रोल में नॉन कंप्लायंस का कोई एलिगेशन है, तो आप उससे कैसे डील करोगे, आप कैसे उसको परफॉर्म करोगे, कैसे आप उसके साथ में, क्योंकि ये फर्म, पर्सनल, क्लाइंट, थर्ड पार्टी कोई भी कर सकता है, इनसाइड द एंटिटी, आउटसाइड द फर्म, है ना. फर्म के अंदर वाले लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं, बाहर के लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं. तो उस केस में हम कैसे उससे डील करेंगे, ठीक है. और इस प्रोसेस में हम क्या चैनल डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ये हम इसको डील करेंगे, कैसे हम एलिगेशन और कंप्लेन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसका जो रिजल्ट है उससे हमें जो डेफिशिएंसी पता चलेगी उससे कैसे डील करेंगे, राइट. सो स्टूडेंट, प्लीज read the standard carefully. At least read one bare standard every day. इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये स्टैंडर्ड ही
हमें गाइड करते हैं, ये हमारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के साथ एथिकल रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को आप इग्नोर ना करें। बीच बीच में सर आपको गाइड भी करते जाएंगे कि स्टैंडर्ड्स को कैसे। एक बात और कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर बताइए। थैंक यू करुणा। अभी मैं आपको बता रहा था स्टैंडर्ड, हमने अभी कह तो दिया कि स्टैंडर्ड कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन करें कैसे करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था स्टार्टिंग से। इसमें मैंने आपको पहला एक टिप दिया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बहुत वेटेज देता हूं उसे, जो कि आपकी लैंग्वेज को धीरे 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 कमांडेड बना देता है, आपकी लैंग्वेज को कमांडिंग लैंग्वेज, कमांडेड लैंग्वेज जो आपकी एग्जाम में, और आप यू आर एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और मैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा फोकस जो करता हूँ हमेशा प्रेपरेशन पे करता हूँ, आई डोंट फोकस ऑन मार्क्स। मैं स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि आप प्रेपरेशन पे फोकस करिए, मार्क्स विल फॉलो। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था एस्सेज की तैयारी कैसे करनी है, कि आप अपना बैकअप बनाओ। उसमें मैंने आपको बताया था 50 ये मिनिमम है। आप 5 डेफिनेशन रिलीजियसली हर रोज, सिर्फ आपका 20 मिनट लगेंगे, 4 मिनट में आप 5 बार डेफिनेशन रीड कर लोगे, आपके माइंड में स्टेब्लिश। 3 दिन तक करना है, लेकिन जो काम करना है 3 दिन कंटिन्यूसली। अभी वैसे मैं 5 दिन कंटिन्यूसली बोलता हूँ, 7 दिन भी बोलता हूँ, लेकिन अभी टाइम की पॉजिटिविटी के कारण आप 3 दिन करोगे, इनफ है। फाइनल ईयर ऐसी फाइनल में हो आप, तो आप ऑडिट कैसे बैकअप बनाना है वो भी मैंने आपको बताया। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू, आप जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था रिकॉर्ड ऑफ, और फॉर एग्जांपल ऑडिट एविडेंस अगर आपको करना है, ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन, वहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर। अब इंफॉर्मेशन यूज करके क्या करेगा वो ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। अब मैंने तो इतना याद रखा है आज दिन तक कि ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर है। अब मैंने इतना याद किया है, और आगे मैं याद करता ही नहीं, बिकॉज आगे मैं क्या करता हूं, लिंकेज बना लेता हूं। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। इंफॉर्मेशन यूज करके मैं करूंगा क्या, इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। कंक्लूजन लेके क्या करूंगा, अब मैं कंक्लूजन लेके मैं रिपोर्ट बना दूंगा। अब कहता है क्या पूरी डेफिनेशन क्या हुई, देखो एक सिर्फ मैं 5 वर्ड याद करके और पूरी डेफिनेशन इससे लर्न कर गया, मैं पूरी डेफिनेशन मैंने माइंड में सेटल कर दी। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। आप वर्ड टू वर्ड मिला लेना, वहां पे ये लिखा है जब मैंने बोला। तो आप इस तरह से बिल्डअप बनाओ। ये तो है मेरा पहला स्टेप कि आप 50+ डेफिनेशन का आप बैकअप बना लो, और मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कैसे बनाओ, ये भी बता दिया है लिंकेज कर करके। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे आप एसेज में लाइफ लॉन्ग मार नहीं खाएंगे, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैडम साथ साथ आपको ये बता रही है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करो केयरफुली कैसे, और मैं आपको ये बता रहा हूं आप एसेज की जो स्किल है उसको शार्पन कैसे करो, क्या एबीसी बनाओ एसेज की, तो इससे आपकी एबीसी बिल्डअप हो जाएगी। आप एग्जाम में ऐसे दौड़ोगे लाइक एन हॉर्स। आप क्या करो, अब दूसरा स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि आप हर एक ऐसे का रिलीजियसली ऑब्जेक्टिव और स्कोप कर लो अच्छी तरह से। हर एक ऐसे का स्कोप क्या है उसका, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे ऐसे ओवरऑल आपके माइंड में फिट हो जाएगा, नंबर भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप कर लोगे। अब मेरे पास क्या हो गया, डेफिनेशन का बैकअप हो गया 50+ से 70 रोज 5 कर लो ना आप, और 30 दिन तक करोगे तो 150 हो जाएंगे। देखो कितना जबरदस्त मुझे इंपैक्ट मिल रहा है, मल्टीप्लायर इंपैक्ट मिल रहा है। और एटलीस्ट 15 दिन तक करना जरूर, 75 डेफिनेशन हो जाएंगे आपके बैकअप। और डेली आप क्या करो, स्कोप 5 ऐसे उठाओ डेली, उनका स्कोप और ऑब्जेक्टिव माइंड में फिट कर लो। तो इससे क्या होगा, आपके ऐसे जो है ना स्किल, लिखने की स्किल शार्पन धीरे धीरे होती जाएगी। इनफैक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव तो बच्चों को क्वेश्चन में, क्योंकि जनरली जो बच्चे सर हमारे पास आते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा स्टैंडर्ड से रिलेटेड है या क्या उसका मतलब वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो स्कोप ऑब्जेक्टिव से उनको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है उसका कौन सा रेफरेंस देना है और क्या उसका जैसा कि ऑब्जेक्टिव है। मैडम ने अभी बताया, देखो आप ऐसे 510 पर बेस्ड था ऑडिट ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, और आप पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं 510 के बेसिस पे, जबकि 510 का बीच में रेफरेंस आना चाहिए था सिर्फ जस्ट, और क्वेश्चन पूछा था एसक्यूसी 1 के ऊपर। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप अगर आप पूरा इन
टोटो अगर करेंगे, इन टोटलिटी करेंगे आप चीज को, आप हर एक ऐसे का ऑब्जेक्टिव और स्कोप आपको पता होगा, तो आप गलती नहीं करेंगे इसमें, फिर एरर होने के चांसेस आपके मिनिमाइज होकर 0 तक पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करो, आप हर एक ऐसे का कुछ एक तो डेफिनेशन और एक आप स्कोप और ऑब्जेक्टिव, ये इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इससे आपकी एबीसी बिल्डअप हो जाएगी, और फिर आप ऐसे के क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप हैंडल करने के काबिल हो जाओगे। ये तो इससे ये एबीसी बनाए बिना अगर आप करोगे, फिर आप क्वेश्चन को रट्टे मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। फिर तो आप जितना मर्जी वैसे ही कर रहे हो, और एग्जाम में आप फिर कहते हो कि मैं ऐसे के क्वेश्चन कर नहीं पाया, बिकॉज आपने एबीसी तो बनाई नहीं थी और वर्ड सेंटेंसेस बनाने लग गए। तो आप इसको एबीसी को डेवलप कर लो। दिस इज माई एडवाइस टू यू। ऑडिट को सीरियसली लो, जैसा कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर दुर्गेश काबरा सर ने भी बोला था कि ऑडिट को स्टूडेंट सीरियसली नहीं ले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप इसको सीरियसली लो, आप जैसे कि आप एफआर को सीरियसली लेते हो, एसएफएम को सीरियसली लेते हो, तो ऑडिट को भी आप ड्यू वेटेज देके रखो। बिकॉज मैडम ने अभी बताया कि जैसे फेलियर जो है ज्यादा होता है, तो आप इसलिए सीरियसली मैं एडवाइस करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि आप कम से कम 4 घंटे हर रोज ऑडिट को जरूर दो। उसके बिना ये नहीं होता। 1 आवर तो आप डेफिनेशन पोर्शन को दो, हाफ एन आवर लगेगा एटलीस्ट हर रोज। और बिकॉज मैं कहता हूँ 3 दिन तक करो, तो अगले दिन से ही 1 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आज आपने 5 की, तो कल 10 हो जाने वाली है, परसों 15 हो जाने वाली है, तो 15 का आपका फिगर फिक्स रहेगा। क्योंकि एक डेफिनेशन मैं आपको कर रहा हूँ, 5 डेफिनेशन का जो आप 3 दिन तक करोगे ना, तो 15 से ऊपर नहीं जाएगा ये फिगर। तो 1 घंटा आपको हर रोज लगेगा डेफिनेशन का बैकअप बनाने में, 1 घंटा आपको स्कोप और ऑब्जेक्टिव में लगेगा, और 2 घंटे आप फिर क्वेश्चंस प्रिपेयर करो एसेस के। तो इससे आपके एसेस बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएंगे। यस करो ना आप कुछ। इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स तो इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रखे हैं, बहुत नया नहीं है, कुछ ही स्टैंडर्ड है जो कि इंटर में एप्लीकेबल नहीं थे, फाइनल में बिल्डअप नहीं किया ना। हाँ, तो अभी आप बिल्डअप कर सकते हो। और ये मत सोचना कि सर ने पहले तो डेफिनेशन बोला, उसके बाद स्कोप और ऑब्जेक्टिव पे आ गए। अभी सर आपको ये भी बताएंगे कि आपको ऑडिटर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो लेटर ऑन, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ऑडिटर का रोल कैसे बताओगे? हर क्वेश्चन में तो यही पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, जो हमारी लाइफ है वो मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जो मार्क्स अब तक जो आ रहे थे, इस बार हमको मिलके साथ चलना है। स्टैंडर्ड्स को कैसे पढ़ना है, वेटेज देनी है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे आंसर देना है, एंड प्रॉमिस अस कि इस बार आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगती है, इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, you can come back to us, you can talk to us, you can write a mail to us, you can write to ask your query given on BoS mobile app, right? So next question, जैसे अभी मैडम कह रहे थे कि आप हमें कॉन्टेक्ट, BoS स्टूडेंट्स 100% हैंड होल्डिंग कर रहा है आपकी, और मैं तो स्टूडेंट्स को अपना इवन मोबाइल नंबर तक शेयर कर देता हूँ कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम है, उसी समय बेशक मुझे फोन कर लो। अगर मैं उस समय नहीं उठा रहा, मीटिंग में हूँ या और कोई काम में बिजी हूँ, तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करता हूँ। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं, फाइनल के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फोन करते रहते हैं, तो मैं अपने नंबर भी अभी शेयर कर दूंगा, और अपना लैंडलाइन भी। आप बेशक एक जो मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर आप उसी मोबाइल पे आप मैडम से भी बात कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो, ऑन सेम मोबाइल, ऑफिस टाइम के अंदर। बाद में अगर आप करोगे तो बाद में भी रिप्लाई होगा। तो आप डोंट वरी, आप 100% हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। ऑडिट में घबराइए मत। आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपके मन में बाद में आता है कि सर से बात करनी चाहिए, मैडम से बात करनी चाहिए, आप, मैं अभी 2 बार आपको अपने नंबर दे दूंगा, और लैंडलाइन भी 01203045 है, मोबाइल नंबर है 9718036119, 9466789298। ये भी एक बार और दे दूंगा आपको नंबर, ताकि, और 100% हैंड होल्डिंग, 100% हम लोगों की कमिटमेंट है, और ऑडिटिंग में रिजल्ट अच्छा लाना है। आप बिल्कुल, जो मैं स्ट्रेटजीज आपको बता रहा हूँ वो 100% टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास 28-30 लेकर आते हैं और फिर 60-60 प्लस मार्क्स लेके जाते हैं, ऐसा नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप बी इन टच विद अस, हम 100% हैंड होल्डिंग करके आपको आगे लेके जाएंगे। आप डोंट वरी एट ऑल। यस करो ना, डेफिनेटली। तो अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो यू कैन बी इन टच विद अस, सो दैट
हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, BOS फॉर योर सक्सेस विल बी सक्सेसफुल देन. ठीक है. So moving towards next question, which is of CA final November 2020 examination. So in this question, Moon Limited is a dealer Yes. in electronic appliances. So would Yes, you like to students. take this? Yes, why not? Yes, students, this question is asked in November 2020 examination. This question is based on SA 501. जो स्पेसिफिक कंसिडरेशन, उसमें 3 बातें हैं. एक तो उसमें हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, दूसरा हम बात करते हैं लीगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और तीसरा सेगमेंट रिपोर्टिंग की. अभी पहला इसमें जो क्वेश्चन था इन्वेंट्री, इसमें 3 बातें मैंने आपको बताई. जैसे पहली बात इसमें इन्वेंट्री की बात, क्वेश्चन इन्वेंट्री पे उसने पूछा. क्वेश्चन जो पूछा गया स्टूडेंट्स, उसमें कहता है ऑडिटर जो था वो उस डेट पे ऑडिट नहीं कर पाया जो डेट उसमें 31 मार्च, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31 मार्च जो थी उस पे ऑडिट, वो फिजिकल ऑडिट नहीं कंडक्ट कर पाया ऑडिटर, उसने बाद में ऑडिट. अब अगर मैं 31 मार्च को अगर ऑडिट नहीं कर, फिजिकली काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं हूं, ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं है, उसको नहीं देख पाया, और वो से 31 मई को फिजिकल काउंटिंग अगर करता है, तो फिर बैकवर्ड आपको सारे कैलकुलेशंस करने हैं. बैकवर्ड जो प्रोसीजर्स हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सेल उसके बाद जो होगी, तो सेल आपको जो स्टॉक उसमें माइनस हुआ है, सेल में जो स्टॉक माइनस, वो एड बैक करना पड़ जाएगा. और उस पीरियड की जो परचेज है, उस पीरियड की जो परचेज है वो आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ जाएंगे. सेल और परचेज की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी. तो ये एग्जाम में लिखना जरूरी था. और परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो होते हैं, अब इसमें इंपॉर्टेंट था जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड वो नहीं लिखा. बाद में क्या, जो मैंने जैसे बताया कि अदर देन द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट था, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मिस आउट कर गए बाद वाली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने परपेचुअल इन्वेंट्री वाली मिस कर दी. एक बार क्वेश्चन रीड कर. हाँ, क्वेश्चन रीड कर लो. स्टूडेंट्स, ये नवंबर 2020 एग्जाम का जो क्वेश्चन है, मून लिमिटेड इज अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस. द कंपनी हैज अ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे उनके सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस थे. Auditor of the company, Messrs. JK Associates, normally attend the physical verification of stock carried out by management. So whoever is auditor, they are normally attending physical verification, right? At the end of financial year. However, on account of certain disturbance, in that reason, certain disturbances were there. So physical inventory counting could not be carried out at the year end. The stock taking is decided to be done by management at some other date subsequently after a month. So try to understand in this question. Generally, JK and Associate normally attend the physical verification at the end of the financial year, but due to certain disturbance in the reason, they could not carry it out till the year end, and they have done it at some other date subsequently after a month, means after financial statements are being, financial year is ending and after a month. So in the light of above fact, the question is asking, enumerate the audit procedures to be considered by JK and Associate if physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statements with reference to relevant standards on तो ये auditing. सारा क्वेश्चन मैडम ने आपको पढ़ के अच्छी तरह बता दिया है. मैंने भी आपको इसका क्रक्स बता दिया था कि उस डेट को जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उस पे वो ऑडिट, फिजिकल काउंटिंग ऑडिटर कर ही नहीं पाया JK एसोसिएट. अब वो अदर देन दैट उसने 1 महीने के बाद करी है और कह रहा है कि आप ऑडिट प्रोसीजर बताइए इफ फिजिकल कंडक्टेड एट ए डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे जब आंसर आप लिखोगे, व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द, अब यहाँ पे मटेरियल वर्ड आ गया. देखो ऐसे आपको कैसे, जो मैं आपको तरीका बता रहा था वो कैसे मदद करेगा. अब यहाँ पे मटेरियल वर्ड आ गया. अब मटेरियल मुझे पता ही नहीं क्या होता है, माइंड में फिट ही नहीं है, तो मेरे को जब मीनिंग नहीं पता तो मेरे लिए क्वेश्चन के आंसर की अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है. अब मटेरियल क्या होता है, मटेरियल आर दोस, मटेरियल आइटम्स कौन से हैं, मटेरियल आइटम्स आर दोस सिग्निफिकेंट आइटम्स होते हैं, द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर मेरे दिमाग में फिट होंगी बातें तभी मैं, ये फिट होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, तो मैं ऐसे के आंसर जो है उनको अच्छी तरह से समझ पाऊंगा. आगे कहता है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
when inventory is material to the financial statements, auditor shall obtain sufficient appropriate audit. अब यहाँ पे sufficiency is the measure of quantity of the audit evidence. Sufficient appropriate audit evidence. Appropriateness is the measure of quality of the audit evidence. Audit evidence मैंने अभी आपको समझा ही दिया था. तो स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपको अभी मैं आपको इससे कोरिलेट कर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था उससे कोरिलेट करके बता रहा हूं कि आप एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करके चल रहे हो. अगर आप एक एक वर्ड को, तो आंसर जो आप करोगे आपके माइंड में एकदम से फिट हो जाएगा. तो क्वेश्चन की प्रिपरेशन की जल्दी, क्वेश्चन आप कम से कम 3 दिन तक आप डेफिनेशन कर लो, 3 दिन तक आप वो करो जो मैंने बताया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. मैडम ने उधर से एक ऐड किया, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कर लो, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है. फिर आप क्वेश्चंस जब करोगे ना तो बहुत आसान लगने लग जाएंगे आपको. तो ये मैं आपको अभी, आप अगर आंसर अभी साथ साथ कर रहे हो तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको सारी टर्म्स भी एक समझ में आ रही होंगी और बड़ा अच्छा लगेगा. अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. अब यहाँ पे स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाता क्या मीनिंग है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें. अब इसमें क्या था, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन कौन सी होती है, यहां पे स्टूडेंट को ये पता नहीं लगता कि इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन ही कौन सी है. नेचर इम्प्रैक्टिकेबल, ध्यान रखो कि सिचुएशन कौन सी होती है. अगर दैट मे पोज थ्रेट्स टू द सेफ्टी ऑफ ऑडिटर, अगर वहां पे जाना मेरी सेफ्टी, मान लीजिए वहां पे से कोई हैजर्डस लाइफ थ्रेटनिंग कोई मटेरियल है, तो फिर वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है. जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह का स्टॉक है और कोई जहरीली आइटम है, तो उसके केस में जो है इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है. और आप ये याद रखना, अगर आप इसमें इम्प्रैक्टिकल और बाकी सब जो, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, दूर है, डिस्टेंस है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये इनेबल एबिलिटी है. तो आपको ये दोनों में डिस्टिंक्शन करना है कि इनएबिलिटी है क्वेश्चन में या इम्प्रैक्टिकल हो चुका है. फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. तो फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन आता है और आप समझ ही नहीं पा रहे कि इम्प्रैक्टिकेबल है या इनेबल है, अगर बहुत ज्यादा नैरो है उसमें डिस्टिंक्शन, तो आप कंक्लूजन दोनों के बेस पे दे दो कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या होगा, इनेबिलिटी है तो क्या होगा, दोनों के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, रेस्ट एश्योर्ड. तो इस तरह से आप क्वेश्चन, अब इसमें स्टूडेंट्स जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो गलती क्या कर गए, गलती क्या कर गए वो मैडम आपको बताएंगे गलती क्या कर दी. इसमें एक तो जब आप, जो आपको बैकवर्ड प्रोसीजर्स अप्लाई करने थे वो ही नहीं आपने लिखे. वेदर द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड और नॉट, जैसे मैं अभी सेल परचेज की बात कर रहा था. रिलायबिलिटी ऑफ, और ना ही ऑडिटर ने वेरीफाई किया कि जो परपेचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो वेरीफाई भी मुझे करने या नहीं करने. तो इस तरह के ये जो 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन के एंड, आंसर के एंड में थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम में लिखे ही नहीं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर गए, जो कि बहुत उनकी वेटेज, ड्यू वेटेज थी उनकी. बिल्कुल. सो जो नवंबर 22 एग्जाम में 2020 एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन 1A था, जो कि ऐसे 501 पे बेस था, उसमें बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का. एग्जैक्टली. ठीक है. और दूसरी गलती ये हुई कि उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर जो है, काउंट डेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेट थी और उसके बाद में जो जिस दिन वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस दिन काउंटिंग हो रही है, वो जो डेट का टाइम गैप है, उसके बीच में क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप उसको, वो चीज मिस कर दी बच्चों ने, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी कि व्हेन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टिंग एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ आपको सुमित जैन पूछ रहे हैं, हाँ, कोविड कैन बी, यस इट वाज इनप्रैक्टिकेबल बिकॉज गवर्नमेंट ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, तो वो इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन थी. 31 मार्च को लोग नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन कितनी बार होता है, तो वो इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन थी. यू आर वेरी राइट, बिल्कुल राइट. तो आप उसमें, वो इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है. मैंने जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग वाले वो दिए वो भी इम्प्रैक्टिकेबल. तो आप अगर तो क्लियरली ड्रॉ कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, और 99% इनेबिलिटी होगी इम्प्रैक्टिकेबल, क्योंकि आंसर में कह रहा है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, तो इम्प्रैक्टिकेबल वाला आपको कम चांस है कि लगाना है. और ये तो क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू टू सर्टेन डिस्टरबेंस नहीं कर पा रहे थे. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो यहाँ आपको क्या गलती हो गई, एक तो रेफरेंस देना है आपको SA 501 का,
दूसरा आपको परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है उसके बारे में बात करना है। तीसरा जो काउंट डेट्स है वो डिफरेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट से, तो वो आप उसमें वहां क्या ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे वो सारी चीजें आपकी इस आंसर में आनी चाहिए, तब हम यहाँ 5 आउट ऑफ 5 लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे मत करो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, नो, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए परपेचुअल इन्वेंट्री होती क्या है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है? कॉन्टिन्यूस अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री ऑन इन्वेंट्री चेंजेस इन रियल टाइम, ऑन रियल टाइम डाटा बेसिस, तो दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, यूसेज ऑफ वायरलेस बारकोड स्कैनर इन ए ग्रोसरी स्टोर। तो वो रियल टाइम बेसिस पे जो ही वो स्कैनर करता है उसको बारकोड का, उधर से बिल कट जाता है। तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, ये दिस इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री। यस, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मे 22 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 1B। वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 1A ऑफ मे 22। बिफोर करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप जब भी अपनी प्रेपरेशन का टिप है आपको, उससे एकदम मेरे दिमाग में आया, मैं कहा आपको कहीं मैं फिर मिस आउट ना कर जाऊं। आप क्या करो, एक इससे इस प्रैक्टिस को करने से आप फाइनल, अभी भी एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ, करो ना सर 9 सितंबर हो गया है और 1 नवंबर से पेपर है, पौने 2 महीने तो भी बचे हुए हैं, बिल्कुल 40 डेज है तो हमारे अभी पास। जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप इसमें एक प्रैक्टिस करोगे, इस प्रैक्टिस से आपके कम से कम मैं आपको कहता हूं कि 10 12 15 नंबर जंप होते हैं इस प्रैक्टिस को करने से। सर आप अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते ही हो, तो आप अपनी जो स्टडी कर रहे हो उसका एक शेड्यूल रजिस्टर जरूर बना लेना, अपना डॉक्यूमेंटेशन बना तो लो। वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। आपने स्टडी कैसे रोज आप जो जिस सब्जेक्ट में जो ये डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज बना लेना, तो आपको इतना 15 दिन के बाद इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा कि 15 दिन का आपके पास ट्रैक होगा कि मैंने आज से 10 दिन पहले क्या किया था, 15 दिन पहले सारा आपकी रिवीजन शेड्यूल वगैरह ये सारा पूरा जो है ना आपकी शेड्यूलिंग हो जाती है। तो इसलिए आप शेड्यूल रजिस्टर आप जरूर बनाओ अपना स्टडीज का, वो एक बहुत बड़ी आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाती है, जो कि आपको महीने बाद तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं इसके, आपको खुद ही बड़ा बेनिफिट लगना शुरू हो जाता है। चलिए मैं आपको ले जाती हूँ फिर से मे 22 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर 1B पे। 1A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में JK लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट हैविंग वेरियस प्रोजेक्ट अक्रॉस स्टेट। YT एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होती है। ऑडिट टीम फ्रॉम YT एंड कंपनी फॉर ऑडिट ऑफ JK लिमिटेड कंप्राइजेज ऑफ CA who is engagement partner. Okay, CAQ a paid assistant and a 3 article assistant. During preliminary verification, CAZ observed that huge amount of subcontract payments were made to Messrs JB Associate. किसने क्या किया है आप ये देखिए, JK लिमिटेड जो है ओके कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में है। YT एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपॉइंट हो गई स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन है एंगेजमेंट पार्टनर? मिस्टर CAZ जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर है, और मिस्टर Q यानी CAQ पेड असिस्टेंट है, और 3 आर्टिकल असिस्टेंट है। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन CAZ जो कि एंगेजमेंट पार्टनर है, ही ऑब्जर्व दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स वर मेड टू मेसर्स JB Associate. Huge amounts are being paid to JB Associate. Who is JB Associate? It's a partnership firm in which director of JKL Limited is managing partner. So what is it? It's a related party transaction. Now if it is a related party transaction, which standard will be applicable? SA 550, right? Related party. The engagement team discussed that SA 315 and SA 240 shall include specific consideration of susceptibility of the financial statements to material misstatement due to fraud or error that could result from JK Limited's related party relationship and transaction. Since there is a related party transaction, so team discussing the situation, and what they are discussing, that SA 315 and SA 240. 240 is about fraud
and 350 is about identifying and assessing the risk of material mistake. Shall include having knowledge of sorry. So SA 350 and SA 240. Okay, identifying, assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. And SA 240 is about fraud. Okay, so what they have discussed? They have discussed specific consideration for susceptibility of the financial statement to material misstatement just because due to fraud or error because there is related party transaction. Okay. So now what they have done, they are discussing, their meeting is being scheduled with among their engagement team to see a Jed who is engagement partner. He is guiding with his engagement team members that please highlight the matters that are to be addressed in the discussion by CA Jed with engagement team members with reference to the relevant standard on auditing. Now your answer should be on the basis of SA 550, right? Your answer should be, now what student have done? The performance for this question is very poor. What they have done? They failed to explain the matter to be addressed. What are the matters which should be addressed by engagement partner? And specific consideration. In fact, they also fail to mention the examples as to how related parties may get involved in fraud, how they can be involved in fraud. So SA 550 is specifically guiding for that how engagement team will discuss with reference to SA 315 and SA 240, that what are the specific considerations regarding susceptibility of the financial statement to material misstatement due to fraud or error. Okay, so what are the matters engagement team should address? So they need to understand what is the nature and extent of relationship and transactions with related parties. Okay, emphasis on the importance of maintaining professional skepticism. What is professional skepticism? It's already being told to you. Okay, throughout the audit regarding the potential for material misstatement. जैसे अभी तुम बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चनिंग माइंड, इट इज क्वेश्चनिंग माइंड बस, और अलर्ट विच इज अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप पूरी डेफिनेशन कर जाओगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड, और विच इज अलर्ट माइंड थ्रू आउट द ऑडिट, दैट्स इट। तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि फ्रॉड और एरर है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है कि उस एंटिटी का क्या रिलेशन है, क्या ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फिर आपकी एम्फेसिस किस पे होनी चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की इंपॉर्टेंस को, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आपको मेंटेन करके रखना है। ओके, रिगार्डिंग पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कौन सी सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस हैं जो इंडिकेट कर रही है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और रिलेशनशिप, ठीक है, विच मैनेजमेंट हैज नॉट आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड, राइट। या रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपको ये इंडिकेशन आ सकती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है। Importance that management and those charged with governance attest to the identification. So these are few example जहां आपको ये देखना है कि SA 315 और SA 240 उन दोनों के बेसिस पे आप क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशन रखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसके लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन इस बारे में था, लेकिन बच्चों ने कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन नहीं दिए, उन्होंने वो मैटर भी नहीं डिस्कस किए जो कि एड्रेस करने थे। दे गिव जनरल आंसर, they were not able to understand. Some are referring SA 240, some are referring 315, and some are as per SA 550. In fact, I met with one student who brought a certified copy and he said ki, and I was shocked to see when question is specifically talking about to answer on the basis of relevant standard or auditing, that student is writing about the companies act provisions. So आप एक बात समझो कि जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली गाइड कर रहा है कि आपका आंसर किस बेसिस पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे होना चाहिए, और आप आंसर किस पे दे रहे हो?
कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस पे दे रहे हो? इसी बात पे हाँ जी सर। एक बात, जैसे अभी मैडम ने बोला कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसे की बात कर रहा है और आप लिख रहे हो उधर से कंपनी लॉ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स एग्जाम में, कई बार ना स्टूडेंट फंस जाता है। अब स्टूडेंट को क्वेश्चन, जैसे मैडम ने भी बताया कि ऐसे बेस्ड था, अब वो आप कई बार तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो अन्य आप एरर कर गए, एरर तो चलो कोई बात नहीं, अगर कई बार हुआ भी है तो वो आपकी जो मैंने तरीके बताए आपको, उससे एरर की पॉसिबिलिटी भी कर। लेकिन कई बार स्टूडेंट इंटेंशनली कर देता है कि ठीक है, मेरे को ये अभी क्वेश्चन आता नहीं है तो मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कंपनी लॉ के बेस से, तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपने तो अपने हिसाब से उसका आंसर कंपनी लॉ के हिसाब से लिख दिया, ऐसे कोई यूज नहीं। तो उस केस में, ऐसी सिचुएशन में आप ये गलती ना करो जानबूझकर। जो क्वेश्चन स्टूडेंट जानबूझकर लिख रहे हैं, तो उनको मैं एक टिप देता हूं यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है ऐसे का, और मैं लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं वहां पे, तो आप समथिंग रेलेवेंट, उससे रिलेटेड लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। रेलेवेंट, समथिंग रेलेवेंट अराइजिंग आउट ऑफ योर माइंड, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखा है, जो आपने एसेज के मैंने स्कोप, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन से करके जो आपने सीखा है। तो ज्यादा नहीं तो 50-60% मैचिंग आ जाएगा, और आप जीरो की सिचुएशन से बच के आप कम से कम 5, अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो 2-3 नंबर पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। यस। May 22 का एक और क्वेश्चन था जो कि स्टैंडर्ड बेस्ड था. We have tried to cover almost all the questions which are based on standards for May 22 एग्जामिनेशन, और उसमें भी बच्चों ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है, और वो था essay 230 जो कि सर ने आपको इतना एम्फसाइज दिया है डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। और क्वेश्चन था, यू आर टीम लीडर ऑफ 10 मेंबर्स फॉर ऑडिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, और सारे टीम मेंबर्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंसर्न है दैट ऑडिट कंप्लाइज विद एसेज. Okay, hence the team member wish to document every matter concerned. In your opinion, it is neither necessary nor practicable for the auditor to document every matter considered or professional judgment made in an audit. Further, you feel that it is unnecessary for the auditor to document separately compliance with matter. मतलब यहाँ आपको क्या लग रहा है कि ये जो compliance हो रही है, जो हम documentation कर रहे हैं, ये unnecessary है. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है, वी विल बी कवरिंग ऑन मंडे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि नाउअडेज क्वेश्चन इज बीइंग पोज्ड ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन, सिचुएशन इज बीइंग गिवन, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ opinion will be expressed and how to write that opinion. And specifically examiners comments are there that students are not drafting the opinion up to the mark. So we will be discussing that, and in fact we will be also discussing one situation wherein many of the standards are interrelated, applicable, and we will be telling you how to identify and how to understand the standard and how to write in that situation. We have lot much to cover. After this, we'll be covering only one standard. Then we will be going to professional ethics, tax audit, where also performance is very, very poor. So for audit documentation, the team member wish to document, okay, whatever matter is concerned, okay, because they are concerned with compliance of essays, okay. So in your opinion, it is neither necessary nor practicable for the auditor to document every matter, okay, for professional judgment. Whatever professional judgment you have made is not important to document. So you feel that it is unnecessary for the auditor to document separately compliance with matter for which compliance is demonstrated by documents included within the audit file. Now, what is being asked in the question? Illustrate by giving example with reference to essay. Now, what student have done? What do you think? You will be discussing essay 230, that's true, because it's given already audit documentation. But is it correct to discuss only permanent audit file or temporary audit file or current audit file? No, because here the question is talking about necessity of maintaining documentation for each and every matter. So you need to tell why it is very important to document each and every matter. What candidates did, they failed to understand the requirement, and what they have explained that audit documentation are to be maintained in temporary and permanent audit file. Who is asking where we have to maintain? Okay, it's relevant, it's important. But what is being asked in the question?
you need to tell examples with reference to relevant essay, why it is important, why it is necessary, and illustrations were also not given by the students. So for this essay 230, it's very, very important. You need to tell it is neither necessary nor practicable to document each and every matter. Okay. But you have to document your professional judgment, what you have decided. Important decision should be in your file so that you can demonstrate. Your audit plan should be documented so that you can demonstrate कि yes, auditor has planned the audit. It's not just कि ऐसे ही कर लिया, या engagement letter is there, it's existing, whether we have agreed in the terms of audit engagement. Now you need to see that in question they are asking about auditor complies with essays. So essays में आपने ये बताया कि हाँ आपने audit plan किया है, आपने एंगेजमेंट लेटर साइन किया है, आपके क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है मैनेजमेंट के साथ में या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, या ऑडिटर जो रिपोर्ट है उसमें जो आपने ओपिनियन एक्सप्रेस की है उसका क्या बेसिस है, क्यों आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस की है, कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस आई थी जिसकी वजह से आपने क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या वॉट एवर ओपिनियन यू हैव गिवन. एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट में ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल में पार्ट होने चाहिए. फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कंप्लायंस से शो कर सकते हैं कि हाँ हमने ये सब किया था, तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए. ओके. इनफैक्ट आपका जो भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो आपका क्वेश्चनिंग माइंड है, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आया है तो वो भी आपको उसमें डॉक्यूमेंट करना है. तो दीज आर एक्चुअली एग्जाम्पल वेर यू कैन शो कि हाँ हमने डॉक्यूमेंटेशन किया इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो स्टूडेंट्स डोंट गिव जनरल आंसर, try to understand what is the requirement of the question, what is being discussed in the question, what is being asked, and how you are writing. Okay. 560. 560. Yeah, job. So before going to professional ethics, we'll be covering one more standard based question. ये standard and question एक और standard हाँ, question हम मंडे को ले लेंगे instead of. or we will be taking हाँ, standard ये based question professional on Monday and we are moving to professional ethics. But just before moving to that, I just want to draw your attention to one question which was on peer review and quality review. Okay. One question was asked about quality review board's power. ठीक है. It's knowledge based question, general question. You have gone through the powers, you are able to write the powers, but in powers only one more situation was mentioned कि quality review board can ask for information, right? If the information is not being provided, कैसे pursue करना है, ये क्वेश्चन में एक पार्ट था जिसको बच्चों ने इग्नोर कर दिया. वो वही पावर्स के साथ ही डिस्कस किया हुआ था. तो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने जो समझा है, जब आप एग्जाम में आंसर दे रहे हैं तो यू नीड टू अप्लाई दैट ऑल्सो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. डोंट इग्नोर एनी important point which is being asked in the question. Here in the question, powers is being discussed in 28D of the CA Act 1949, and central government has made chartered accountants procedure of meeting of quality review board, terms and condition of services and allowances of the chairperson and member of the board, rule 2006. Now what was asked in the question? Elucidate the power of quality review board. Here you need to write quality review board's power in discharging its function. And second part, one part was you have to write the powers, and second part was how the quality review board would proceed in case it does not receive the information called for by it from any company. So power of quality review board, they can on its own or specialized arrangement, they can ask information also. But when it is not being provided by the company, how we need to pursue? We need to approach board, may request the central government in the MCA for assistance in obtaining the information. So this was given in powers only. It's discussed with that only in the study material, but students are not able to understand this part and they have not written this part. Therefore, the performance was below average.
performance was very low. They only refer to the various powers but failed to mention to approach MCA or Central Government of India in case information called is not received by QRB. Now try to understand, this question is of 5 marks, and in the situation 2 questions are being posed. If you are ignoring one part, then you are losing marks. You are not attending the question paper for 5 marks. So try to understand, read the question twice and thrice, identify what is the requirement, what is being asked in the examination. If there is 1, 2 or 3 part, mark it that yes, I have to answer this, this and this. So all the 3 parts you have to answer, okay? And it's given with the matter only. In fact, just like this question, one more question was there that was based on professional ethics, where CA Ruhi veto power wala question jo tha. But before that, CA Ravi, a practicing chartered accountant, was proprietor of Messrs. Ravi and Associate. Same type of example is discussed in our study material. Okay. Professional ethics question. Yeah, professional ethics question. Before starting of professional ethics, मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स को तैयारी आपको कैसे करनी है. सर इस क्वेश्चन के बाद 1 मिनट ठीक. हम उसको कवर कर Sure, लेते हैं. sure. तो ये जो क्वेश्चन था, ये आपको चैप्टर में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ एक ट्विस्ट किया गया था. वहां पे आपको एक डेट दे दी गई थी कि रवि डाइड ऑन 15 सितंबर 2020, ओके, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. डेट ऑफ डेथ इज बीइंग गिवन, और जो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो हम फर्म का नेम सेल कर रहे हैं उसकी डेट दे दी थी 30 सितंबर 2021. See, name or this arrangement can be done for 1 year only. So 1 year is passed on 15 September 2021. So this was the only change made in the question. Otherwise, same situation and question is being given in study material also. But very sorry to say, students were not able to apply that, and they wrote about the clause, they discussed about the provision, but they could not understand that 1 year requirement, they could not interrelate it, and for that, just because of that, they could not answer whether Ruhi can sell the practice. No, because 1 year is already being passed. And if CA Balwan, who is purchasing the name of the firm from the widow of deceased member, will name be valid? No, because 1 year is already being lapsed. So that was very important, but student have given answer generally. And in fact, one more question was asked in May 22 examination, that was about professional ethics and peer review process. Student correctly mentioned the clauses, but they could not give the reference of SEBI notification, because in that question listed entity was involved. And for listed entity, if somebody is auditing, must have gone through peer review process, and this is given in SEBI notification, also discussed in our study material. So audit of listed entity pursuant to SEBI notification, statutory auditor of listed company under the Companies Act 2013 shall be done by only those auditors who have subjected themselves to peer review process of the institute and hold a valid certificate issued by peer review board of the ICI. So you have mentioned correctly the clause number, you are writing the clause correctly, but you are not able to apply that. In question it is given that the entity is listed and he is never subject themselves to peer review process since its inception of practice, and they are being appointed as auditor, which is not correct. So you need to write the clause. Along with that, you need to give this legal statutory requirement also. Of course, for that you can write the answer on the basis of clause 9 or clause 1. But in this question, where listed entity is there, and for becoming auditor of listed entity, you have to subject themselves to peer review process of the institute, and you should have a valid certificate. And wherein in the given situation, the K and associate was never subjected themselves to the peer review process since its inception of practice. So instead of writing
though you have written correct clause number, you have discussed the clause rightly, you have given the conclusion rightly, but you failed to discuss about this SEBI notification, which was very, very important and which was required in the answer. Okay, giving over to you, sir. Please guide on the preparation of professional ethics. प्रोफेशनल एथिक्स की क्लॉजेज, क्लॉज नंबर आपको वहां पे लिखना पड़ता है, क्लॉज पूरी लिखनी पड़ती है कि क्या है। अब क्या प्रोफेशनल एथिक्स की क्लॉज को पेपर में लिखना कोई इतना इजी टास्क नहीं है, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको कोई भी क्लॉज अच्छे से बता नहीं पाते और पेपर में गलत ही लिख देते हैं, तो मीनिंग कुछ निकल रहा होता है और वो क्लॉज कुछ होती है। तो आप इस तरह के मिस्टेक्स जो है उनको अवॉइड, सबसे पहले तो आप ये समझो इसको तैयारी करें कैसे। इन वन डे, ऑन वन सिंगल डे, आप 3 क्लॉजेज को तैयार कीजिए अच्छी तरीके से। और तैयार करने का मतलब होता है कि एक क्लॉज को कम से कम 10 टाइम्स रीड करो, तो आपकी क्लॉज माइंड में सेटल होती है फॉर 3 डेज। तो आपकी एक क्लॉज से और होती है 10 टाइम्स, तो मिनिमम कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो 20 टाइम्स तक रीड करो क्लॉज। जब तक आप वर्ड टू वर्ड मैच ना करो उस क्लॉज को मत छोड़ो। और एक दिन में 3 से ऊपर, अब ये नहीं कि एक दिन में मैंने 10 क्लॉजेज कर ली, आती लिख मैं एक भी नहीं पा रहा। एग्जाम में तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, जो आपने वहां लिखा हुआ है। और प्रोफेशनल एथिक्स की वेटेज भी 10 to 12 मार्क्स का तो पेपर आता ही है सर। 12 to 18 मार्क्स है। 12 to 18 मार्क्स बताओ। सेक्शन 5 है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स को तैयारी करने के लिए आप इसको रोज प्रैक्टिस करो। डेली यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 क्लॉजेज। टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेज कितने, 36 के आसपास है। हाँ जी। तो 36 के आसपास आपके टोटल 33 और 36 के बिटवीन क्लासेज है। तो आपके 11 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली प्लस 3 डेज, क्योंकि मैं कहता हूं 3 दिन तक प्रैक्टिस करो, तो आपके 14-15 डेज के अंदर पूरा प्रोफेशनल एथिक्स रेडी हो जाएगा। आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आप 3 क्लॉजेज को रोज टारगेट करो, और रोज करना है प्रोफेशनल एथिक्स। उधर से स्टैंडर्ड्स को भी डेली करना है, प्रोफेशनल एथिक्स को भी रोज करना है। आपके ऑडिट में मार्क्स, आप प्रेपरेशन आप करो, मार्क्स विल कम आफ्टर। ठीक है, मार्क्स के बारे में नहीं सोचना आपने। तो नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। अब क्या होता है, स्टूडेंट आता है, मैं कहता हूं कि चलो ये क्लॉज नंबर 1 सुना ना, शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1, पहली लाइन है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यही नहीं आती होती, ये भी नहीं सुना पाते, बताओ। अब ये एक तो, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है हर एक शेड्यूल के अंदर, ये तो फिक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो कुछ सर्विसेज वाली वो शेड्यूल है वो बात अलग है, लेकिन ये लाइन तो स्टैंडर्ड ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल इफ ही, फिर उसके बाद वो क्लॉज है allows any person, पहली क्लॉज है allows any person to practice his name in his name as a chartered accountant unless such other person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by him। तो ये आपकी क्लॉज है, इसको आप सेम 10 टाइम्स रीड करके आप इसको प्रैक्टिस करो। जाना तो आप 20 टाइम्स तक जाओ, लेकिन छोड़ो नहीं उसे। और फिर आप देखो आपका प्रोफेशनल एथिक्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मैं फोकस करता हूँ प्रेपरेशन पे, तो प्रेपरेशन इस तरीके से करो। क्वेश्चंस कैसे आंसर करने मैडम आपको बता ही रही हैं साथ साथ। In fact, I would like to add on not only for professional ethics, for engagement and quality control standard, for CARO 2020, for tax audit clauses, यहाँ पर भी आप कुछ पार्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं। लाइक एक दिन में आपने 5 क्लॉजेस किया, उसके बाद नेक्स्ट डे उन 5 को आपने रिवाइज किया और नेक्स्ट 5 किया। इस तरह से आपके जो क्लॉजेस होंगे वो अगर 7 डेज में भी प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपका इतना रिवीजन स्ट्रांग हो चुका होगा कि आप बहुत बढ़िया से आंसर कर पाएंगे। और जिस जिस पार्ट में आपको डर लगता है, लाइक टैक्स ऑडिट में बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है, मे बी दे हैव नॉट गॉन थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वेरी सीरियसली, और मे बी दे आर जस्ट स्किपिंग दैट टॉपिक की लुकिंग एट कि यार ये 100 पेज का है या 150 पेज का है। डोंट लुक एट पेजेस, बिकॉज हमने वहां पे बहुत सारे इलिस्ट्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस इंसर्ट कर रखे हैं। हर क्लॉज के बाद हम कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन दे दें ताकि आप प्रैक्टिस करके उसको अंडरस्टैंड कर सके, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो सके। नॉट ओनली विद स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, जहां आपको इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो और वो सारा है। तो आप पहले उसको लर्न करें एक दिन में। जैसे आपने 5 क्लॉजेस लर्न किए, नेक्स्ट डे आपने उनको 5 को रिवाइज किया और नेक्स्ट 5 लर्न किए।
ऑफ कोर्स सेकंड डे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थर्ड डे जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। शुरू के जो 5 है आपने लर्न किए हैं, नेक्स्ट डे जो 5 किए हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और इस तरह से जब आपके प्रोफेशनल एथिक्स के जो टोटल 34 क्लॉजेज है, अगर आपने 7 दिन में किए तो आपके जो क्लॉजेज है वो बहुत अच्छे माइंड में सेट हो जाएंगे। इसी तरह से कारो 2020 और टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस को भी आप लर्न कर सकते हैं with number. Try to learn with numbers also, so that you can write, because there is specific marks are being allocated to numbering also, number and provision. So आपको आदत डालना है कि आपको नंबर साथ में याद करना है, नंबर साथ में लिखना है। जब इतना होने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जब आप मॉक टेस्ट पेपर या आरटीपी के क्वेश्चंस आप लिखोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करो, आंसर के साथ आप जब इवेल्युएट करोगे कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट मिस हो रहा है, हम क्वेश्चन को क्या सही समझ पा रहे हैं, सही क्लॉज अप्लाई कर पा रहे हैं। आप जब एमसीक्यू और इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो बुकलेट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हम प्रोविजंस को करेक्टली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज फॉर टैक्स ऑडिट स्पेसिफिकली, टैक्स ऑडिट जो है उसमें परफॉर्मेंस बहुत पुअर है स्टूडेंट्स। टैक्स ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो सेक्शन वाइज वेटेज हमने दिया हुआ है, वहां सेक्शन 3 जो है उसके अंदर आपका ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और उसकी वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टैक्स ऑडिट से सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा, मे बी इट इज समटाइम्स 8 और 10 मार्क्स और 12 मार्क्स। तो इसलिए आप टैक्स ऑडिट को भी बहुत ध्यान से पढ़ें उसके साथ में, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आता है और क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर्स के जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू राइट। क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि आप ही हमारे आगे जाके प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। आप अगर अभी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अभी हमारी प्रिपरेशन कमजोर होगी तो आगे जाके हमारे लिए आंसर लिखना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इंटरलिंक करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑफ कोर्स ऑडिटिंग का सिलेबस वास्ट है, आप उसको प्रैक्टिकल बना के, इंटरेस्टिंग बना के, थिंक कि मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूं, आई एम प्रोफेशनल, आई एम फ्यूचर ऑफ माय प्रोफेशन, और मुझे आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा नॉलेज कैसा होना चाहिए, मुझे क्या मैं जस्ट रॉ नॉलेज, या मुझे उसको इग्नोर करना है, या मैं एनालिसिस या इंटरप्रेट कर पाऊं क्या सिचुएशन है और अकॉर्डिंगली उसको इंटरलिंक करके आंसर कर पाऊं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम 5-5 क्लॉजेस से भी करेंगे तो 44 क्लॉजेस है टैक्स ऑडिट में। सुमित, टैक्स ऑडिट में आप 44 जो क्लॉजेस है उनको एक दिन में 5-5 करो ना, 10 दिन में अगर आपके 44 क्लॉजेस आप अच्छे से कर पाते हो तो बहुत देर तो नहीं लगेगी, और वो जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। और एग्जाम में आप क्वेश्चन की एनालिसिस करके, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू राइट बेस्ट आंसर, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट, स्पेशली फॉर ऑडिटिंग सब्जेक्ट। डोंट थिंक ये थ्योरेटिकल है, बोरिंग है। इसको आप फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन समझते हुए ये समझिए कि अगर आप ऑडिट करने जाते हैं, आप टैक्स ऑडिट करने जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या आप उसको रिपोर्ट करोगे, नहीं करोगे, और करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, कहां दिया हुआ है, वो क्लॉजेस में दिया हुआ है। तो इसलिए आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है, एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके सर, अभी टैक्स ऑडिट की बात हो रही थी, वैसे मैं मंडे को आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं एक बेसिक बताता हूँ। सुमित जैन ने क्वेश्चन पूछा है इन पर्टिकुलर, टैक्स ऑडिट की क्लॉजेज को ऐसे नहीं करना कि मैंने क्लॉज अपना रीड करी 5, नो नो नो, ऐसे नहीं, उसको वैसे नहीं करना आपने। टैक्स ऑडिट की क्लॉज जो है उसमें जो इनकम टैक्स का सेक्शन आ रहा है उसको अच्छे से पहले करना है, तभी आपको, नहीं तो अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट द क्लॉज, रेलेवेंट क्लॉज। अब फॉर एग्जांपल क्लॉज नंबर आपकी है 42 फॉर एग्जांपल है, अभी मैं मंडे को वैसे ज्यादा इसको आपको डिटेल, उसमें 285 BA सेक्शन आ गया इनकम टैक्स का।
285 बीए जब तक आपको आप स्टडी नहीं करोगे, उसको एक बार रीड अच्छी तरह नहीं करोगे 285 बीए, तो आप क्लॉज वो समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स, टैक्स ऑडिट की क्लॉजेज को आप एक दिन में 2 उठाओ, 3 उठाओ, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शंस अगर जो बीच में आ रहे हैं, अगर उनको नहीं समझ के फिर टैक्स ऑडिट आपके दिमाग में कभी जाएगा ही नहीं, याद रखना मेरी बात। टैक्स ऑडिट में हमेशा इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स का सेक्शन वो जो बीच में आ रहा है वो अगर नहीं पढ़ा, जैसे कि आप अभी ग्रुप, जो स्टूडेंट्स खाली ग्रुप 1 देने या ग्रुप 2 की अभी तैयारी नहीं की है, वो इनकम टैक्स का सेक्शन ओवरलुक करेंगे तो फिर टैक्स ऑडिट समझ में नहीं आएगा, ये याद रखना ना। आप क्लॉज फिर आप रट्टा मार रहे हो, और रट्टा कभी भी कामयाब, आप, मैं आपको हमेशा प्रैक्टिस के लिए कहता हूं, कभी रटने के लिए नहीं कहता चीजों को। आप अंडरस्टैंड करके उसकी प्रैक्टिस करो, और अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर आप क्लॉज आपने 10 बार, क्या मैं कहता हूँ 50 बार भी रीड कर लोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स सेक्शन, तो आपके दिमाग में कभी भी फिट नहीं होगी, आई कैन गारंटी दैट। तो इसलिए आप उसे पहले क्लॉज को, बिफोर यू रीड द क्लॉज, इनकम टैक्स के सेक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी तो क्लॉज नहीं हो सकती, यही मैंने कहना था। यस करुणा, बिल्कुल, इसीलिए स्टडी मटेरियल थोड़ा सा बल्कि सा लगता है, उसको देख के लगता है ना कि बहुत डिटेल में दिया हुआ है बहुत सारा, क्योंकि वहीं पे हम उस सेक्शन को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि बच्चे का टाइम सेव हो जाए, और जब वो क्लॉज को पढ़े तो उससे रिलेवेंट सेक्शन वो वहीं पे रेफर करे, उसके साथ में उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। सुमित, आपने तो, सुमित ने लिखा भी कि आई हैव पास ग्रुप 2, इट इज ओके फॉर यू, कि अगर आपने ग्रुप वेरी 2 वेरी पहले, कांग्रेचुलेशन, आपने ग्रुप 2 पास कर लिया, बहुत अच्छा हो गया। आप अब ग्रुप 1 के वन पे अंदर फोकस आप करो। इनकम टैक्स के सेक्शंस अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाओगे। आपने तो ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 285 बीए वगैरह ये सब पढ़ लिए होंगे, तो आप उसको जल्दी से कर सकते हो। फर्क ये, आप 2 की जगह 5 क्लॉजेज जरूरत कर लो, लेकिन अगर किसी ने ग्रुप 2 नहीं करा हुआ तो वो एक दिन में 1-2 क्लॉजेज ही करो, ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने ऐसे ही पार्शियल में भी किया है। साइमल्टेनियसली चलाओ, जैसे एक दिन के, अभी मैडम भी बोल रहे थे जैसे कारों के क्लॉजेज भी उठाओ, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हो, आप 1 आवर, 1.5 आवर कम से कम आप एसेस के लिए एलोकेट करते हो, 1 आवर आप प्रोफेशनल के लिए रोज, और रोज करो ये डेली, ऑन डेली बेसिस, बिकॉज इफ यू, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो फिर आपका डिस्टेंस हो जाएगा सब्जेक्ट से, और जो ही डिस्टेंस बनेगा तो सब्जेक्ट आपके माइंड में सेटल नहीं होता। फिर अभी टाइम जो ही एग्जाम पास आ जाता है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या वर्क करती है कि आप हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ो, और उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करो रोज, बिकॉज वो आपका फिर उनसे डिस्टेंस नहीं बनता, ये लॉजिक है पीछे। अगर मैंने उससे डिस्टेंस, अब हर रोज मैं प्रोफेशनल चीज कर रहा हूं, तो मैं प्रोफेशनल चीज से कभी भी एग्जाम के टाइम तक भी आउट ऑफ टच नहीं होऊंगा। हर रोज मैं एसेस पढ़ रहा हूं तो एसेस से भी आउट ऑफ टच नहीं हुआ, और हर रोज अगर मैं टैक्स ऑडिट के 1-2 क्लॉजेस कर रहा हूं उससे भी आउट ऑफ टच नहीं हुआ, तो मैं एग्जाम तक ऑडिट के आउट ऑफ टच नहीं होऊंगा कभी भी किसी भी चैप्टर से, जो खासकर जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। यस तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस, प्लस पेपर का पैटर्न, क्या हमारी सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 1 30 to 48 मार्क्स, और सेक्शन 5 लास्ट बट नॉट लीस्ट 12 to 18 marks weightage. Okay, so these two sections are very very important which we have discussed, and of course we have touched section 4 and 3 also, but we'll be discussing more in detail on Monday. We'll also practice about drafting of opinion, identifying the situation. So students, till the time you need to work hard. In case if you have any query, if you find any difficulty, you can come back to, you can contact us. You can ask your query through Ask Your Query app given on BoS mobile app. एंड जहां भी आपको जो भी डिफिकल्टी लगती है वो आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। जहां भी आपको लगे कि हम इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चे आते हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होगा, कई बच्चे क्लॉज 7-8 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यू डिलीजेंस लगेगा या तो उनको आइडेंटिफाई करने में हम हेल्प कर सकते हैं। और आफ्टर डूइंग प्रिपरेशन आप मॉक टेस्ट पेपर अपेयर कीजिए और उसके अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, जिस तरह से हमने अभी आपको पीवाईक्यूज की हेल्प से समझाया है
कि हम क्या मिस्टेक करते हैं और what we should not repeat so that we can get good marks. So one thing is, don't ignore any of the topic. Like, standards on auditing are very, very important, statutory, ethically, and for getting marks in examination also, right? Secondly, professional ethics is also very important because we are moving towards our profession. We will be chartered accountant, qualified chartered accountant. Just like I told you, if the doctor is not knowing about the composition of medicine or not knowing the procedural part perfectly, we will not approach the doctor. In fact, we will boycott. So in the same way, if we are professional and its core of profession, auditing is very important subject. Don't think it is dry and it is boring. It's bulky. It's not bulky. You are the only one who can make it. You can make it easier with the help of your notes, your flowcharts. You can study and you can prepare your flowcharts for your revision. You'll be able to quickly revise. So for standards, at least read bare standard, prepare flowchart, what is the name of the standard, number of standard, what is objective, what is scope, what is the auditor's role, what is its auditor's responsibility, and how auditor will deal in that specific situation which is discussed in that standard. Along with engagement and quality control standard, you can segregate it that on one day you are doing one standard, just like, and next day you are revising with the help of your notes or flowcharts, and then you are moving towards next standard. You also practice with the help of question, with the help of MCQ and case scenario booklet, so that you are able to manage your stress, so that you can be able to write and you are able to interrelate the provisions standards in the with the question, and you can write the correct provisions. Similarly, tax audit, which of which some questions will be taking where you have done mistake. The major thrust is you are not students are not aware of clauses. They are not aware what are the provisions, what are the reporting requirements. So please don't be casual for that topic, because it is also very, very important. And sometimes it is of 10 to 12 marks questions are being asked, maybe in MCQ form, maybe in descriptive part. So please don't ignore this topic. If you find any difficulty, you can be in touch with me or Rajiv sir, so that we'll be guiding you how you can move ahead. If you are finding any difficulty in any specific clause, then also you can approach to us. In case if you are finding any difficulty in any specific topic, you can refer our live coaching classes, live recorded lectures, which are available on your BoS mobile app. You can download it and you can see that. Okay, the time is indicating us to wind up. So till the time, we'll be meeting you on Monday. Till the time, you be prepared, and if you have any specific query, you can be in touch with us. So life may be tough, things will get rough, there will be bad days, it may all seems like a hiss, but though it all, always stand tall. Giving up is not an option. Never turn your back and run. Work hard and we'll be moving towards our objective and we'll be getting success. So please work hard. Don't go for shortcut. Don't try to go for shortcut like what we can get in smaller duration of time. Please try to understand, if you will be going for shortcut, then the marks will also be get. Okay, so with this, all the best, sir. Please. मैं आपको भी पॉयलट एक प्रोजेक्ट देता हूँ. अभी हमारे पास गैप है, 12th को हम दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से. आप 9th 10th 11th 3 डेज में 15 डेफिनेशंस का बैकअप बन सकता है. और अगर आप 2 एसेज के स्कोप ऑब्जेक्टिव रोज करते हो तो 6 एसेज के आपके स्कोप ऑब्जेक्टिव. आपका मंडे को कॉन्फिडेंस अलग होगा, अलग तरह के आप क्वेश्चन पूछोगे. और अगर आप 3 कारों की क्लॉजेस हर रोज करते हो तो आपकी 9 क्लॉजेस तैयार हो जाएंगी. प्रोफेशनल एथिक्स की भी 10 क्लॉजेस आपके रेडी हो जाएंगे मंडे तक. तो आप ये सारा काम होमवर्क दे रहा हूं आपको, पायलट प्रोजेक्ट है. आपका कॉन्फिडेंस मोरल बूस्ट हो जाएगा तब तक. आप ये वाला पायलट प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया, होमवर्क दिया है, आप जरूर करके आइएगा. विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. और मैंने अपने नंबर्स मैंने आपको कहा था दोबारा से बता देंगे हम. आप 100% हैंड होल्डिंग हम लोग कर रहे हैं आपकी. 01203045 925 एंड मोबाइल नंबर्स 9718036925
119946678928। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मोबाइल में पहली बार में नहीं तो आपको कॉल बैक जरूर करेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। So, BOS for your success subject specific session. Hopefully, इस सेशन से we are able to guide you and we'll be helping you more. Your feedback is very very important. Please provide your feedback in case if you need something else. या आपको कोई और guidance चाहिए, कुछ और help चाहिए, you can approach to us, you can write to us. With this, we'll be meeting you on Monday, 12th Thank you. September. Thank you. Thank you so much. And Wish you today, all the best. for this subject specific session, I was CA Karuna Bhansali and And I am CA Rajiv Sachdeva. thank you.